established. Connection established.
How we gonna know that it have देवियर सजनों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आ चुके हैं हम मेरे दोस्त आरवी के साथ ईस्टर्न 8 सीजन 2, जो कि हो रहा है इंडियन गेमिंग कोप्स की तरफ से, जहां पे आप 30,000 डायमंड्स के लिए पार्टिसिपेट कर चुके हैं। एंड जितने भी दर्शक पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ, वो जीत सकते हैं 3,000 डायमंड। गिव चल रहा है आप दोस्तों, तो मौका है आपके पास, तो जल्दी से जल्दी जुड़ते जाइए। आज जो है वो हम पहुंच चुके हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए। हमारे पास अब हमारी टॉप 8 टीम्स बची है, जो कि आगे जाने वाली है सेमीफाइनल के लिए। देखते हैं कौन सी दो टीम होगी आज जो अपना नेम लेके जाने आगे के राउंड के लिए। चलते हैं मेरे दोस्त आरवी के पास, उनसे जानेंगे आज की जो हमारे मैचेस है उनके बारे में। थैंक यू सो मच एसएम। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो आज के मैचेस हैं क्वार्टर फाइनल्स के, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज के जो मैचेस होंगे बहुत ज्यादा धुआंधार होने वाले हैं। आज हमारे पास टीम सेलेस है, सेल्सियस है, टीम लफू का भी है, टीम किड्स है, उसी के साथ टीम एबीएम के भी मैचेस हैं। तो कहीं मत जाइए, कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। आज जो आपको एंटरटेनमेंट मिलने वाला है वो आप बहुत 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 ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अगर आपने आज मिस कर दिया तो आपको रिग्रेट बहुत ज्यादा होगा, तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। आज की मैचेस सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट मैच ही है लफू कभी का, दे आर जस्ट टू गुड मैन, दे आर जस्ट टू गुड। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मैच है वो यहाँ पे सिलिसियस ई स्पोर्ट्स एंड रैंडम के बीच में रहने वाला है। तो चलिए, कुछ ही क्षण में हमको बैन फेज एंड यहाँ पे पिक की का फेज है वो स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं कौन से हीरोज जो है वो पिक होंगे और कौन से हीरोज जो बैन होंगे। हमने लगातार देखा है कि मेटा हीरोज जो है, जिसने की बात करें चिप की या बात करें हम हाइलोज की, तो ये हीरोज आपको ज्यादातर बैन होते हुए दिखते हैं। और जो मेटा हीरोज है वही कहीं ना कहीं पिक होते हुए दिखते हैं। कहीं जहाज छूट गया तो पिक हो जाता है। हमने रॉजर देखा है कि फर्स्ट पिक में नहीं छोड़ते हैं। तो चलेंगे मेरे दोस्त आरवी के पास। जो हायाबुसा का हमने गेम प्ले देखा था भाई, वो क्या वापस से उसके साथ स्टिक करेंगे या फिर कुछ नया स्ट्रेटेजी लेके आएंगे? देखिए, रेगुलर बैन दिख रहे हैं और हमारे दोस्त एक्सपर्ट आरवी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे आज का जो ये मैच है उसके बारे में उनकी राय। आज के जो मैचेस है, अगर स्पेशली आप हाया की बात करेंगे तो भाई दैट हाया वाज एक्सेप्शनल। वैसा हाया अभी तक हमने किसी का नहीं देखा था। बैक टू बैक हमें दो मैचेस में सेम हाया का आउटस्टैंडिंग गेम प्ले देखने को मिला था, और उम्मीद है हमें आज फिर से कुछ ऐसा मिलेगा। बैंस की बात करेंगे तो पिक सबसे कॉमन और सबसे मेटा बैंस हमें देखने को मिल रहे हैं। चिप, जब उसको पता ही अगर चिप किसी के पास ओपोनेंट में गया तो ओपोनेंट के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि उनकी मोबिलिटी, उनका जो सपोर्ट होता है अपनी टीम्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो बैकअप बड़े प्यार से टाइमिंगली कर सकते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आती है। तो चिप यहाँ पर बैन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसी के साथ जहाज का, सॉरी, हाइलोज यहाँ पर बैन देखने को मिला है। यस, हाइलोज बैन देखने को मिला टीम सेल्सियस की तरफ से। हाइलोज और लास्ट में एक मैच देख रहा था दूसरे टूर्नामेंट में, वहां पर क्या हुआ था, जो ओपोनेंट थी वो पूरे मैच में हाइलोज को मारने की कोशिश करती रही। ना हाइलोज मरा ना वो मैच जीते। तो हाइलोज एक ऐसा हीरो है, अगर ओपोनेंट के पास गया तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। वो मरेगा नहीं और आपको बाकी टीममेट्स को मारने ही नहीं देगा। तो इसलिए हाइलोज बैन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ जुक्शिन बैन देखने को मिली है। फोर्थ बैन देखते हैं सेल्सियस की तरफ से क्या होने वाला है। झास्क द नेक्रोमेयर उन्होंने बैन कर दिया। झास्क को बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। एसएम से जानना चाहूंगा उनके क्या विचार है नेक्स्ट अपकमिंग बैन्स के बारे में। क्या बैन हो सकता है इसके अलावा? चलिए, इसके अलावा तो जैसे हमने बात किया है जो वो बैन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं रॉजर एक बैन की तरफ हो सकता है। अरे ये मैं नेम लेने वाला था उससे पहले, चलिए हमको देखने को मिल गया, क्योंकि ये हीरो देखिए हमने देखा है कई बार। जैसे आप बात कर रहे थे, ऑफेंस के लिए भी ये माने जाते हैं और डिफेंस के लिए भी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा हीरो निकल के आता है जिससे आप बचना चाहो तो बच सकते हो, आप मारना चाहो तो मार सकते हो। अगर मेरी लैंग्वेज में कहूं तो थोड़ा आप खदेड़ना चाहो तो खदेड़ भी सकते हो। एंड चलिए, लॉलीटा का भी बैन देखने को मिल रहा है आजकल। आरबी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कई बार जो हमारे प्लेयर्स हैं जो अच्छे रैंक पे खेल रहे हैं, वो लॉलीटा एंड हाना भी ये जो कॉम्बो बनाते हैं वो काफी डेडली कॉम्बो रहता है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से क्या आपको लगता है कि लॉलीटा, हालांकि मेटा पिक तो है, उसके पास सील्ड की जो एबिलिटी है वो कमाल की है, तो क्या उसी वजह से कहीं ना कहीं ये बैन जरूरी बन जाता है ये?
डेफिनेटली लोलिटा की जो शील्ड है, पहले लोलिटा की शील्ड सिर्फ रोकती थी, अभी लोलिटा की शील्ड रिटर्न कर देती है। मतलब अगर आप उसकी तरफ बम फेंकोगे तो बम आपकी तरफ वापस आ जाएगा। तो लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोलिटा को बैन किया जाए। सपोज लोलिटा ओपोनेंट के पास चलेगी, आप एक मार्क्समैन ले रहे हैं, मॉस्कोव सपोज आपने पिक कर लिया, तो मॉस्कोव जितना ज़्यादा डैमेज देने की कोशिश करेगा उसकी टीममेट्स को उतना ज़्यादा रिटर्न में मिलेगा। मतलब 100 रुपये दिए, 100 रुपये वापस मिल गए, तो वहाँ पर नुकसान आपका ही होगा, आप कुछ खरीद ही नहीं सकते, सब आपको जाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लोलिटा बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। पिक्स की बात करेंगे तो रैंडम्स ने फाइनली हमारा वुल्फ गाय रॉजर पिक कर लिया भाई। अगर रॉजर अभी आएगा, डॉली चाय वाला है प्लेयर का नाम जिसने रॉजर पिक किया है, तो ये मुझे लगता है कि ओपोनेंट अभी हमारा वुल्फ गाय चाय पिलाएगा ओपोनेंट को और फिर उन्हें भगा भगा के मारेगा। सेल्सियस की बात करें तो उन्होंने पिक कर लिया है लिंक, और इसी के साथ हमारी रोबी दीदी आ चुकी हैं फील्ड में। देखते हैं दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। स्पेशली यहाँ पर रूबी एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकती है। रूबी का जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज्यादा अच्छा है, इसी के साथ जो क्राउड कंट्रोल प्रोवाइड करती है अपनी टीम को वो भी आउटस्टैंडिंग है। तो नेक्स्ट पिक्स की बात करते हैं, एसएम से पूछते हैं क्या लगता है उनको नेक्स्ट पिक्स क्या होने वाले, रूबी स्पेशली लिंग और रूबी को काउंटर करने के लिए। देखिए लिंग ऐसा हीरो है जिसको आप काउंटर करने के लिए समझ लो कि मिनसितार जैसे मेरा फेवरेट रहता है। जैसे कोई भी असेसियन हीरोज है ना, तो उनके अगेंस्ट में मिनसितार ऐसा हीरो निकल के आ जाता है कि वो आपको निकलने नहीं देता है। उसके अलावा आप अगर जैसे हायाबुजा ओपन है तो हायाबुजा जो है घुस जाता है उसके अंदर, तो फिर वही दिक्कत रहती है कि जब फिर आप बाहर ही नहीं हो तो फिर आप पकड़ नहीं सकते हैं। देखिए लिंग के पास क्या रहता है कि जब लिंग अल्ट यूज करता है तो उसके साथ सेकंड स्किल का कॉम्बो बैठना चाहिए। तो अब क्या कि जब अल्ट के साथ जो उसकी तलवार होती है वो कलेक्ट कर पाता है तो ही उसको जो है कूल डाउन रिड्यूस मिलता है, नहीं तो फिर वापस उसको दिक्कत हो जाती है। तो जो लिंक यूजर होते हैं कहीं ना कहीं उनको फास्ट रहना पड़ता है, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो कहीं ना कहीं काफी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है उनको भी। और देखिए पिक कमाल के देखने को मिल रहा है, काफी प्रभावित कर रही है दोनों टीम ये जो हीरोज पिक हो रहे हैं उनकी तरफ से। अब बात करें वेक्साना की, बात करें मिनोटोर की, अब बात करें टेरिजला की, तो कहीं ना कहीं अभी टेरिजला का आगमन हुआ है तो रूबी जो है वो हमको रोमिंग करते हुए दिख सकते हैं। हमने गोल्डन रूबी भी देखा है कई जगह, तो वो भी एक कमाल का निकल के आता है। बट सिलिसियस जो हमारे इंडियन मेट है वो हमने ज्यादातर देखा है कि रूबी जो है वो रोम करते हुए दिखेंगे कहीं ना कहीं। और एक्सबॉक्स चलिए वो बैन होते हुए दिख चुका है। एंड अगले हीरो अभी देखिए दोनों टीम ने मार्समैन पिक नहीं किया है। क्लिंट अच्छा ऑप्शन निकल के आता है वैसे कहीं ना कहीं, टैंकी हीरोज है सिलिसियस के पास, तो फिर क्लॉड के साथ भी जा सकता है। एंड मैजिस चलिए वो भी बाकी है, तो कहीं ना कहीं अच्छा बैन कह सकते हैं अरोरा का भी। और लू ये है, अभी लूनक्स भी है, और लूनक्स भी एक अच्छा पिक रह सकता है अगर कोई जहन में रखते हैं तो। ओके हैरिथ का भी बैन आ चुका है, हैरिथ के पास स्पीड मोबिलिटी वो कमाल की रहती है कहीं ना कहीं, उसी वजह से ये भी एक योग्य बैन कह सकता है। तो सही बैन दोनों टीम की तरफ से। देखिए यहां तक पहुंचे हैं मतलब ये अपना लेवल दर्शा रहे हैं। आज की जो टीम्स है वो काफी सारी टीम्स को खदेड़ते हुए पछाड़ते हुए क्वार्टर फाइनल के अंदर अपना सफर तय करने के लिए आई है। बेस्ट ऑफ 3 का ये गेम है, उसका पहला गेम आज का मैच 1 कुछ ही क्षण में हमको स्टार्ट हुआ दिखेगा। चलिए 3-3 पिक आ चुके हैं, अब मेज जो है वो ले चुके हैं रैंडम्स। सिलिसियस को मेज लेना बाकी है, क्या वो लूनक्स के साथ जाएंगे? जाकि फिर लो ये भी उनके पास ऑप्शन में है। तो दोस्त मेरे आरवी क्या यहाँ से कौन सा ऐसा मेज होगा जो वो उनके जहन में लेके चल रहे होंगे? और जो बात करें एमएम की तो कौन सा एमएम हो सकता है, या फिर नॉन एमएम स्ट्रेटेजी भी हमने कई बार देखी है। आंसर्स तो यहाँ मुझे नॉन एमएम स्ट्रैटेजी के साथ लगता है, बट अभी यहाँ पर डिपेंड करता है सिलेस क्या पिक करती है। अगर सिलेस एक और टैंक के हीरो के साथ जाती है तो शायद हमें कैरी रैंडम्स की तरफ से देखने को मिल सकती है। बट अगर ऐसा नहीं होता, दोनों टीम्स विदाउट एमएम जाती हैं, तो यहाँ पर एक और टैंक यानी हमें घटोत्कचा डेफिनेटली किसी ना किसी साइड में देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारा जो मैकेनिकल बॉय जो अपने सर पे एक छोटी सी बच्ची बिठा के घूमता है, और द जौहड आ चुका है। मुझे कभी कभी डर लगता है भाई, ये इतनी तेज दौड़ता है अपनी सेकंड स्किल के साथ, अगर इसकी बच्ची नीचे गिर गई तो बेचारा क्या करेगा, बिकॉज बच्ची कंट्रोल कर रही है, तो इसको थोड़ा सा संभाल के चलना चाहिए ना। तो इसी के साथ देखते हैं, हमारा इसका डैमेज बहुत ज्यादा इंसेन होता है। सपोज अगर हमारे जॉहेड ने टारगेट कर लिया, वेक्साना को टारगेट कर लिया, तो वेक्साना का वहां से बच के निकलना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। 99% ऑफ द टाइम अगर जॉहेड आपकी टीम में है तो जॉहेड एज अ फाइट इनिशिएटर का काम करता है। वो युद्ध का आरंभ करता है, जो सामूहिक युद्ध हो रहा होता है उसकी शुरुआत जॉहेड के थ्रू ही होती है। अभी यहाँ पे 3 फाइट इनिशिएट करने वाले आ चुके हैं। जॉहेड फाइट इनिशिएट कर सकता है, टेरिजला फाइट इनिशिएट कर सकता है, और रूबी भी फाइट इनिशिएट करने में सक्षम है। जबकि ओपोनेंट के पास सिर्फ माइनोटोर है, और माइनोटोर को काउंटर करने के लिए इनके पास सिर्फ रूबी और टेरिजला है। माइनोटोर यहाँ पे एक बेटर एडवांटेज इसलिए देता है बिकॉज जो माइनोटोर की सेकंड स्किल होती है उससे पूरी टीम को एक अच्छा खासा हेल मिलता है। अगर हम लेट गेम की बात करें, अराउंड 14-15 मिनट गेम्स की बात करें, तो माइनोटोर अराउंड 600 एचपी तक का रीजन देता है, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी टीम के लिए, आपके टीममेट्स के लिए। यहाँ पर फाइनली हमें लास्ट के 2 पिक देखने को मिल रहे हैं। हमारे अल्फा भैया आ चुके हैं और इसी के साथ आरलॉट आ चुके हैं। आरलॉट सीसी देने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। यहाँ
रैंडम्स की बात करूँ तो ये इनका जो 1v1 में उतने ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। इनकी जो मेन स्ट्रैटेजी रहेगी वो यही रहेगी, टीम फाइट के साथ जाना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे। कोशिश इनकी ये रहेगी कि टीम्स को एक साथ पकड़ें और एक अच्छा खासा डैमेज प्रोवाइड करें। सेल्सियस यहाँ पर जो लिंग है वो 1v1 फाइट में जाने की क्षमता रखता है। टेरिजला 1v1 फाइट में अच्छा खासा डोमिनेट कर सकता है अगर टेरिजला के अल्फा आता है या फिर आरलॉट कोई भी आता है। टेरिजला के पास एक अपर हैंड रहता है। और इसी के साथ अनएक्सपेक्टेड मेज गॉड, भाई पहली बार मैं देख रहा हूं टूर्नामेंट में किसी ने गॉड पिक किया है और अब हमें फाइनली कामेहामेहा देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं कामेहामेहा कितना ज्यादा पावरफुल होता है हमारे सेल्सियस की तरफ से। फाइनली दोनों टीम्स के हीरोज पिक हो चुके हैं। कुछ ही देर में हम जो लैंड ऑफ डॉन में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से हमारी खेती बाड़ी का सफर प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में आपसे पूछना चाहूंगा, अभी हमें पिक्स तो पता चल गई है, ठीक है, हमें ये भी पता चल गया कौन सी टीम के पास एडवांटेज ज्यादा है। तो फर्स्ट ब्लड क्या लगता है कौन सी टीम के चांसेस है यहाँ पर फर्स्ट ब्लड बड़े प्यार से निकाल सकती है अर्ली गेम्स में? देखिए जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे सिलिसियस ई स्पोर्ट्स जो है वो उनके पास ऐसे हीरोज है जो 1v1 में अपना जो है पलड़ा भारी रख सकते हैं। अगर टीम फाइट जो गैंग देखने को मिला हमको तो कहीं ना कहीं रैंडम्स की टीम में से ना फर्स्ट ब्लड लेते हुए जाएंगे। अगर कोई 1v1 में जो है द्वंद्व युद्ध में पकड़े जाते हैं किसी साइड के अंदर तो हो सकता है कि सिलिसियस ई स्पोर्ट्स जो है वो फर्स्ट ब्लड लेती हुई हमको दिखेगी। एंड जो कहते हैं ना कि कई बार मैं जैसे हम लोग काफी बार मंच जो है शेयर कर चुके हैं तो मैं आपसे कहता रहता हूं कि आपको ना आपके जो मुंह से वो छुपा के रखने चाहिए। तो क्या सिलिसियस ई स्पोर्ट्स की तरफ से यहाँ पे जो गॉड का पिक देखने को मिला है और वो कुछ चमत्कारी पिक हो सकता है? क्या वो कुछ हम जो सोच रहे हैं उससे भी आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने सोच के लिया होगा? क्योंकि ये जो टीम है कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं, ये टीम अपना जो नेम है वो बनाती हुई है। ये हमने इनको काफी सारे टूर्नामेंट्स में देखा है। हमने ईस्टर्न एमलबीबी इनका गेम प्ले देखा है लास्ट गेम में, हालांकि उनका थोड़ा लैग हो रहा था उसके बावजूद भी वो खेल रहे थे। तो ये देखिए एक्सपीरियंस टीम है। तो कहीं ना कहीं ये अपने जहन में लेके ही चल रहे हैं कि ये पिक है, उनसे उनको क्या रणनीति के साथ आगे जाना है। तो काफी मजेदार देखने को मिल सकता है गेम भी। बाकी क्या कहना चाहेंगे आप? जो आपका चाहिए सवाल रहता है वो चलिए आपने अभी से पूछ लिया है। तो आपकी जो मनोकामना है वो क्या कह रही है कि किसके साथ जो है पहला खून यानी कि फर्स्ट ब्लड जो है जाता हुआ दिखेगा? फर्स्ट ब्लड के जो ज्यादा चांसेस है मुझे आर्लॉट यहाँ पर फर्स्ट ब्लड सिक्योर करने में कामयाब हो सकता है। इसी के साथ लिंक के भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बिकॉज इनके पास टैंकी हीरोज हैं। अगर हम बात करते हैं टेरिजला की और रूबी की, अगर रूबी यहाँ पर रोम जाती है और हमारा जो जॉहेड है वो यहाँ पर गोल्ड लेन जाता है तो रूबी टेरिजला एक साइड एक लेन में जाके थोड़ा सा अर्ली डोमिनेट कर सकते हैं। लैंड ऑफ डॉन में हम कर चुके हैं प्रवेश, 1 मिनट का हो चुका है प्रारंभ और दोनों टीम्स ने अपना अपना जो रेड बफ है उसे सिक्योर कर लिया है। ब्लू बफ की तरफ बढ़ते हुए खेती बाड़ी यहाँ पर अच्छी खासी चलती हुई और ऐसे में बताना चाहूंगा एक अच्छा खासा हमें प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है टीम ईस्टर्न एज की तरफ से। इसके लिए मैं इनकी बहुत अच्छी खासी तारीफ करना चाहूंगा। पहली बार ये मैंने चीज देखी है कि किसी टूर्नामेंट में, स्पेशली इंडियन बेस्ड टूर्नामेंट में, जहां पे हमें डबल कैमरा फीचर देखने को मिला है। तो आई एम रियली इंप्रेस विद दैट। वापस चलते हैं मैच की तरफ। तो हमारे मिड लेन में थोड़ा सी कसमकश चलती हुई दोनों टीम्स के बीच में। टॉप लेन में रूबी के अगेंस्ट रॉजर है, बॉट लेन में हमारे टेरिजला के अगेंस्ट आर्लॉट है। टेस्ला के बाद थोड़ा सा अर्ली गेम एडवांटेज रहेगा एंड शायद यहां पर हमें फर्स्ट ब्लड देखने को मिल सकता है। पकड़ने की कोशिश, भागना चाहते हैं, गॉड को यहां पर किल किया जाएगा। आर्लॉट अंदर गए, फर्स्ट ब्लड सिक्योर कर लिया और इसी के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ हमारे रैंडम्स का किल यहां पर मिली है। वेक्साना की लिंग ने यहां पर किल सिक्योर किया। सेकंड किल की तरफ बढ़ना चाहेंगे बट नहीं बढ़ पाएंगे, उनकी खुद की जान खतरे में है, पूछ उठा के भागना पड़ रहा है और इसी के साथ यहां पर जॉहेड है और आर्लॉट का किल सिक्योर कर लिया। तो 2 किल्स मिल चुके हैं हमारे सेल्सियस ई स्पोर्ट्स को और इसी के साथ 1 किल के साथ काम चलाना पड़ेगा हमारे रैंडम्स को। यहां पर मैच अर्ली गेम से बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग चलता हुआ फिर से यहां पर पकड़ने की कोशिश की जा रही है। टेरिजला यहां पर थोड़ा सा विजन देने की कोशिश करें। कामेहामेहा हमें देखने को मिला है गॉड की तरफ से, उसका ज्यादा एडवांटेज नहीं हुआ। कामेहामेहा इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा अगर वहां पर सीसी नहीं है। तो यहां पर हमारी टीम सेल्सियस को ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले सीसी करे उसके बाद कामेहामेहा का यूज करें। चलते एसएम से। यहां पर तो उलट पुलट हो गया, सोचा हमने कुछ और था, हो कुछ और गया। लगा नहीं था यहां पर आर्लॉट क्या कहते हैं अंदर घुसेंगे। तो क्या कहेंगे इस अर्ली गेम फाइट के बीच में? दोनों टीम्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही हैं, सेफ गेम नहीं खेल रही है। क्वार्टर फाइनल से स्टिल वो इतना ज्यादा एग्रेसिव खेल रहे हैं। क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है इस चीज का? देखिए कहीं ना कहीं दोनों टीम के जहन में ये रहता है कि यहाँ पे बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला की बात के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले टर्टल चलिए सिक्योर कर लिया यहाँ पे लिंग ने काफी तेजी के साथ। उन्होंने भी चले अपनी टीम के लिए एक योगदान दे जरूर दिया है, आगे बढ़ रहे हैं, एक और किल निकालना चाहते हैं, गॉड किल निकालने में कामयाबी हासिल करेंगे और डोली यहाँ पे चलिए सबको मौली पिलाते हुए आगे जा रहे हैं एंड वो भी किल बटोरते हुए दिख रहे हैं आर्लॉट। हालांकि एक बार जान जरूर गवाई है बट उन्होंने भी किल जरूर निकाला है। तो दोनों टीम देखिए आपको किल निकालते हुए दिख रही है, अच्छा खासा खेल रही है। दोनों टीम की तरफ से एक अप्रतिम गेम प्ले देखने को मिल रहा है। चलिए 1v1 का बैटल देखने को मिलेगा। रॉजर चलिए सही समय पे पीछे हट चुके हैं, लेन कट करने के लिए रूबी आए थे
उन्होंने पहली प्रायोरिटी मिनियन को क्लियर करने में दी, क्योंकि ना जरूरी बन जाता है मिनियन वेव क्लियर करना यहाँ पे भी। और अब बात करते हैं आरवी, जैसे आप बोलो दोनों टीम अग्रेसिव उनकी तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं यही दोनों टीम के जहन में रहता है कि जितना जल्दी हो सके ना पहले गेम से यहाँ पे पता कर लिया जाए कि सामने वाले के अंदर ना कितनी क्षमता है। तो पहला गेम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दोनों टीम, ये डू और डाई सिचुएशन खेल रहे हैं कि चलिए बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल घनी। यही सिचुएशन आ गई है कि चलिए हम कोशिश कर रहे हैं, मिल गया तो मौका है, नहीं तो फिर एक और चांस तो है ही। इनके पास क्या बेस्ट ऑफ 3 का आज राउंड है, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं बेफिक्र हो गया पहला राउंड में अपनी जो है पूरी क्षमता के साथ, पूरे आक्रोश के साथ ये जो है मारने वाला गेम प्ले खेलते हुए दिख रहे हैं कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और ये मारेगा भी। चलिए बॉयको के ऊपर हमला हो चुका है, इसी के साथ गैंग का आराम हो चुका है। बॉयको निकल नहीं पाए क्योंकि 4 प्रतिद्वंदी उनके ऊपर आ चुके थे हमला करने के लिए, उनको चलिए मृत्यु का स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हालांकि बफ चोरी करने के लिए आए जरूर है, कामयाबी उनको मिल सकती है, लेकिन क्या उनकी दीवार उनको लेके जाने में कामयाबी मिलेगी? चलिए वो भी निकल चुके हैं, लेन कट करने को भी दिख रहा है यहाँ पे। लॉर्ड फंसते हुए दिख रहे हैं, बैकअप जा रहा है, मिड लेन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही क्षण के अंदर कछुए महाराज की एंट्री होगी, टर्टल का एक बार फिर से आगमन होगा, टर्टल के लिए एक बार फिर से युद्ध होता हुआ दिखेगा। तो आरवी मेरे दोस्त, टर्टल के बारे में क्या राय है आपकी? इस बार कौन सी टीम जो है टर्टल को लेके अपना जो गोल्ड डिफरेंस है, जो गोल्ड की बढ़त है वो लेता हुआ हमको दिखेगा? देखिए जो अर्ली गेम का एडवांटेज होता है, स्पेशली गोल्ड की बात करना चाहूंगी, बहुत ज्यादा फायदा होता है। और यहाँ पे हमें एक और नया स्पेशल इफेक्ट देखने को मिला है, टोटल कैमरा मिड लेन में हमें फाइट देखने को मिल सकती है। वेक्साना की जान खतरे में अच्छा खासा डैमेज दिया जा रहा है, इसी के साथ यहाँ पर किल सिक्योर कर लिया हमारे अल्फा ने जॉयहेड के ऊपर। जॉयहेड को यहाँ पर मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। सेकंड टर्टल जो हमारा यहाँ पर आ चुका है, देखते हैं ये टर्टल किसके खाते में जाएगा। कोशिश पूरी कर रही है, लिंक यहाँ पर अंदर आना चाहते थे बट लिंक को हमारे जो माइनोटॉर थे ने पहले ही बता दिया कि अंदर आओगे तो पीटे जाओगे। टर्टल यहां पर सिक्योर कर लिया, अल्फा ने परफेक्ट रेट्रिब्यूशन, लिंक यहां अंदर गए थे बट डैमेज बहुत ज्यादा है, भागना पड़ेगा पूंछ पकड़ के। इसी के साथ यहां पर बहुत ज्यादा डैमेज हमारे जो वेक्साना दे दिया उनको भी यहां पर झेलना पड़ सकता है, बट अभी उनकी एचपी काफी ज्यादा अच्छी है। पीछे से टेरिस लाए डैमेज देना चाहते हैं, क्या यहां पर वो किल निकाल पाएंगे? चांसेस बहुत ज्यादा कम बनते हुए, भागने की पूरी कोशिश। वेक्साना ने यहां पर एक और किल सिक्योर कर लिए। टीम यहां पर रैंडम्स ने तहलका मचा दिया, हमारे डॉली चाय वाले ने सबको चाय पिला दी है जहर वाली, जिसकी वजह से जो उनकी टीम है लीड कर रही है और ओपोनेंट जहर वाली चाय पी के मौत के घाट उतरते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। काफी अच्छा परफॉर्मेंस में देखने को मिल रहा है हमें टीम और रैंडम्स की तरफ से। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा खेलेंगे, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा था कि सेल्सियस वन साइड डोमिनेशन करेगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर सब कुछ रूपांतरण हो चुका है, चीजें बदल चुकी है। लिंक यहाँ पर ओपोनेंट का बफ लेने आए हैं, मुझे नहीं लगता कि ओपोनेंट का बफ उन्हें इतने प्यार से मिलेगा। उन्होंने बफ तो सिक्योर कर लिया, सेकंड के लिए अंदर बढ़ना चाहते हैं, वेक्साना को मारना चाहते हैं। माइनोटॉर किल लो, वेक्साना का अल्टीमेट लो, वेक्साना पे किल सिक्योर कर चुके, बट पीछे से आर लौट आया, उन्होंने लिंक को पकड़ लिया। इसी के साथ लिंक को एक किल मिली, बट साथ ही साथ उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है, अगर आप हाइपर खेल रहे हो और आप किल्स के लिए मरेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलते हैं एसएम से, यहां पर पलड़ा भारी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें टीम रैंडम्स का। क्या ये रैंडम्स यहां पर अपना नाम बना पाएंगी या फिर हमें एक थोड़ा सा अपर हैंड दोबारा देखने को मिलेगा सेल्सियस की तरफ से? क्या विचार है आपके? चलिए बहुत ही अच्छा गेम प्ले यहाँ पे रैंडम्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। रैंडम्स भी लाइक अब हमको रैंडम्स नहीं रहना है, हमको भी चाहिए नाम, हमको भी चाहिए सम्मान, और चलिए उसी के लिए खेलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पहला गेम है, और भी 2 गेम क्या देखने को मिलेंगे हमको वो तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा चलिए यहाँ पे रुके हैं क्योंकि टर्टल का आगमन हो रहा है। टर्टल का आगमन जैसे ही हो गया दोनों टीम उनके इर्द गिर्द आते हुए दिखेगी। चलिए दोनों टीम उनके आसपास मंडराती हुई दिख रही है। एक बार फिर से टीम फाइट का आगाज हो सकता है क्योंकि योद्धा जो है आ चुके हैं रणभूमि के अंदर, युद्ध भूमि के अंदर। लेकिन उससे पहले द्वंद्व युद्ध देखने को मिल रहा है रॉजर और रूबी के अगेंस्ट में, बट भागना पड़ेगा। रूबी एक बार फिर से फंसे हैं, बॉयको बार बार कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन कामयाबी अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। रॉजर एक सही रणनीति के साथ खेल रहे हैं, पहले मार खा रहे हैं, जैसे ही रूबी को कॉन्फिडेंट आ रहा है, पीछे हट रहे हैं तो टीम सपोर्ट आ रहा है। टर्टल का आगमन हो चुका है और इसी के साथ टर्टल कहीं ना कहीं सिक्योर कर सकते हैं। किलिंग स्प्री रॉजर ने निकाल लिया है, एक अपर हैंड दिलवाया अपनी टीम को, लेकिन उछलते कूदते हुए लिंग आए, टर्टल को सिक्योर किया। चलिए ये सेल्सियस ने करवा दिया यहाँ पे चमत्कार को नमस्कार। एक अच्छा रणनीति कह सकते हैं यहाँ पे टीम सेल्सियस की तरफ से भी, और लेकिन उनको काफी अभी खामियाजा तो भुगतना पड़ना है। अगर आप किल की बात करें तो किल के मामले में वो जो है थोड़ा सा बिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 5-10 का स्कोर देखने को मिल रहा है। सेल्सियस जो है वो थोड़ा सा पीछे हट चुके हैं किल के मामले में, लेकिन टावर की बात करें तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लिंक देखिए उछलते कूदते हुए अपनी ताकत जो है वो पूरी झोंक रहे हैं क्योंकि ये जो एक पॉइंट है उसको कोई गंवाना नहीं चाहता है। जो पहला पॉइंट है वो हर कोई अर्जित करना चाहता जरूर है,
एक बार फिर से आए हैं, क्या फंसेंगे इस बार? रूबी को बार बार घेरा जाता है, इस बार भी शायद कहीं ना कहीं लग रहा है कि घेरा जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि टीम फाइट में ये टीम काफी एक बड़ा परचम वाली टीम है, इनको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। गॉड की अल्टी का सपोर्ट मिला, लेकिन एचपी देखिए आप, टेरिस्ला काफी कम एचपी है, सर्वाइव कर गए, भाग्यशाली रहे यहाँ पे थोड़ा सा। गॉड का सपोर्ट मिला, लिंक का सपोर्ट मिला, उसकी मदद से थोड़ा सा फायदा जरूर हुआ है। और कुछ ही सेकंड्स में लॉर्ड का आगमन होता हुआ भी दिखेगा। तो आरवी ये जो रैंडम्स का विजय रथ आगे बढ़ा है, तो क्या ये लॉर्ड के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखेगा और भी, या तो फिर लॉर्ड जो है वो कमबैक करवाएगा? यहाँ पर लॉर्ड एक अच्छा खासा कमबैक करवा सकता है हमारे टीम सेल्सियस के लिए। लीड बहुत यहाँ पर ज्यादा नहीं कहूंगा, 5 किल्स की लीड है, जिसे कभी भी एक टीम फाइट से कवर किया जा सकता है। अगर एक टीम फाइट आपने अच्छी खासी जीत ली तो जो मैच है टोटली रूपांतरित हो जाएगा, आपकी टीम के पलड़े में आ जाएगा। बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप गलतियां करना अफोर्ड नहीं कर सकते। 9 मिनट का गेम प्ले हो चुका है, अब यहाँ पर आप गलतियां करेंगे, एक गलती भी आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। जो लीड सिर्फ 5 किल्स का है वो यहाँ पर 7, 8, 10 में बदल सकती है। माइनोटॉर की यहाँ पर किल लेने में सिक्योर हो पाए, लेने के लिए शट डाउन कर दिया डबल किल के साथ। फाइनली जैसा कि मैंने कहा था, यहां पर आपको रूपांतरण देखने को मिलेगा और रूपांतरण यहां पर दिखता जा रहा है। यहां पर जो हमारी टीम सेल्सियस है कमबैक की तरफ बढ़ती हुई 2 किल सिक्योर कर लिए बिना किसी नुकसान पे आगे बढ़ते हुए। यहां पर जो हमारा बफ है उसको यहां पर स्टील करने की कोशिश की जा सकती है लिंक की तरफ से। क्या यहां पर जाएंगे? नहीं जाएंगे, उन्होंने बड़े प्यार से लेने दिया हमारे अल्फा भैया को, और ये बफ अल्फा भैया को नहीं मिला, उनके हाथों से निकल गया। उनका रेटरी अभी भी अलाइव है, शायद वो अपना रेटरी बचा के रखना चाहते थे हमारे शिव शंभू के लिए। शिव शंभू पधार चुके हैं, आरती अर्चना स्टार्ट हो चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पर क्या, यहाँ पर शिव शंभू टीम सेल्सियस की तरफ जाएंगे डेफिनेटली। यहाँ पर रूबी ने हुक कर लिया, लिंक ने यहाँ पर लॉर्ड को सिक्योर कर लिया, रूबी ने यहाँ पर सिक्योर कर लिया हमारे अल्फा पे। सेकंड किल की तरफ बढ़ते हुए डबल किल के साथ यहाँ पर माइनोटॉर ने अल्टीमेट यूज कर दिया, जिसका फायदा देखने को मिल सकता है बट नहीं मिलेगा। डबल किल, टीम सेल्सियस यहाँ पर वाइप आउट कर चुकी है टीम रैंडम्स को, और इसी के साथ उन्होंने आगाज कर दिया है अपनी डोमिनेशन का, अपना प्रभाव का, अपना वर्चस्व का। यहां पर 2 किल्स के लीड बना चुके हैं, लॉर्ड सिक्योर कर चुके हैं। कोशिश यही करेंगे इस लॉर्ड के साथ इस मैच को समाप्त किया जाए और फटाफट नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ा जाए। क्या लगता है कि ये मैच खत्म होने वाला है एसएम इस लॉर्ड के साथ? देखिए कहीं ना कहीं ये जो गेम है वो चमत्कार को नमस्कार करवाती है। हमने देखा कि यहाँ पे चमत्कार किया है टीम सेल्सियस ने, जो रैंडम्स का एक विजय रथ आगे बढ़ रहा था उनको रोका है और खुद का विजय रथ लेके अब आगे जरूर आए हैं। लॉर्ड जाएंगे जरूर, अब इन्वेटर टावर बचे हैं, उनके ऊपर प्रहार करते हुए दिखेंगे। लेकिन देखना रहेगा कि अगर यहाँ पे एक आध मृत्यु निकाल लेते हैं टीम रैंडम्स की यहाँ पे सिलेसियस, तो उनको काफी अच्छा फायदा हो सकता है और ये गेम अंत की तरफ भी लेके जा सकते हैं। बट अभी उनको थोड़ा सा थमना पड़ेगा, अभी उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि रैंडम्स जो है वो तैयार है। चलिए शांत कर दिया गया है, शिव शंभू को आए जरूर थे बट अब शांत हुए हैं। टीम फाइट का वापस आगाज होता हुआ दिख रहा है। क्या निकलेंगे टावर के बाहर? क्या वो जाएंगे? क्योंकि उनके बफ जो है वो तो चलिए यहाँ पे सिलिसियस जो है वो निकालते हुए दिख रही है, जंगल के ऊपर तो कब्जा करते हुए दिख रहे हैं। क्या टीम रैंडम्स जिस चीज का उन्होंने आगाज किया था, क्या वो चीज के ऊपर वापस बरकरार कर पाएंगे? अब आरलॉर्ड को देखिए, कोशिश अच्छी थी, घेरा था यहाँ पे गॉड को, लेकिन पकड़ नहीं पाए। गॉड सही समय पे वहां पे निकलने में कामयाब हुए जरूर है, क्योंकि उनके पास फ्लीकर था, फ्लीकर का एक सही समय पे इस्तेमाल देखने को मिला थोड़ी देर के लिए। और फाइट का जो है विराम होता हुआ दिखेगा, जैसा कि हम बात कर रहे थे, जैसे आरवी ने, मेरे दोस्त ने बोला कि लॉर्ड जो है वो कमबैक करवाएगा, तो लॉर्ड जो है उनके साथ कमबैक देखने को मिला। जो एक टीम फाइट का अंतर था दोनों टीम के बीच में किल का, वो अब बढ़ के उल्टा हो चुका है। जो पहले 5 माइनस में चल रहे थे अब +2 में जा चुके हैं। अब अंक तालिका की बात करें तो टीम रैंडम्स के जो किल है वो 12 है, टीम सेल्सियस के जो किल है वो हो चुके हैं 14। फार्मिंग डिफरेंस की बात करें तो वो कुछ ही क्षण में हमको वो भी दिख जाएगा, और देखते हैं कि किस हिसाब से अब दोनों टीम्स यहां से आगे बढ़ेगी। कुछ ही क्षण के अंदर हमको वापस लॉर्ड आता हुआ दिखेगा। तो इस बार क्या लगता है कि टीम रैंडम अगर ये लॉर्ड ले लेती है तो फिर किस हिसाब से गेम जाएगा? और या तो फिर जो है इस बार आक्रोश के साथ आएंगे, इस बार इनहैंस लॉर्ड आएंगे। अगर यहाँ पे सेल्सियस को मिलता है तो क्या ये गेम अंततः की तरफ जाएगा? डेफिनेटली यहाँ पर फिर से हमें बॉट में फाइट देखने को मिल सकती है, पकड़ा जाएगा, यहाँ पर किल लेने की कोशिश की जाएगी। बट इसी के साथ हमारे जो अल्फा भैया भागने की पूरी कोशिश करते हुए माइनोटॉर का यहाँ पर अल्टीमेट वेस्ट हो चुका है, और यहाँ पर टेरेस्ला का भी अल्टी वेस्ट हुआ था। लॉर्ड हमारे यानी शंभू 9 सेकंड में पधार जाएंगे। जैसा आप कह रहे थे, अगर यहाँ पर जो हमारी टीम सेल्सियस और लॉर्ड लेती तो क्या मैच खत्म हो सकता है? डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं इस चीज के। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है
जबकि हमारी जो टीम रैंडम, इनके पास सिर्फ इनहिबिटर टर्रेट्स बचे हैं, जिसमें से 2 टर्रेट्स की शील्ड भी टूट चुकी है, शील्ड खत्म हो चुकी है। तो अभी जो लॉर्ड आएगा उसकी सहायता से, एक तो वो 12 मिनट का लॉर्ड है जो थोड़ा ज्यादा डैमेज देता है टर्रेट्स पे, स्पेशली बेस पे एचपी ज्यादा होती है तो रोकने की यहाँ पर संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर हमारे जो माइनोटॉर है विजन देते हुए लॉर्ड स्टील की कोशिश की जा सकती है। अल्फा आ चुके हैं, क्या अल्फा यहाँ पर अंदर घुसेंगे? चांसेस बहुत ज्यादा कम मुझे दिखाई दे रही है। और हमारी टीम सेल्सियस ने भी लॉर्ड को छोड़ दिया, रिस्क नहीं लेना चाहते। लॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी टीम में लॉर्ड जाएगा उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसी का फायदा उठाते हुए लिंक ने बॉट लेन से एक और टर्रेट निकाल चुके हैं। तो फाइनली उनका बॉट लेन से इनहिबिटर टर्रेट खत्म हो चुका है। लिंक को पकड़ना चाहते हैं, आरलॉर्ड चेज कर रहे हैं, क्या यहाँ से लिंक बच के निकल पाएंगे? पीछे से वेक्सान आ चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्किल का कॉम्बो लग चुका है। लिंक की जो इमॉर्टलिटी थी यानी संजीवनी बूटी, वो यहाँ पे ट्रिगर होकर चुके, भागने की पूरी कोशिश बट बच के नहीं निकल पाए। और इसी के साथ यहाँ पर शट डाउन हो चुका है लिंक। बॉट लेन में यहाँ पर अच्छी खासी फाइट देखने को मिल रही है। अल्फा को पकड़ना चाहते थे बट फाइनली यहाँ पर किल लेने में हमारे जो टेरिजला थे वो कामयाब हो पाए। और टॉप लेन पे हमारी रूबी ने 2 वर्सेस 1 की सिचुएशन में किल सिक्योर किया, आरलॉर्ड को मारा और वेक्साना दीदी को भी मारा। 1 वर्सेस 4 की सिचुएशन है। यहाँ पर मुझे लगता है लॉर्ड की आवश्यकता ही नहीं है। जो हमारी टीम सेल्सियस है इस मैच को बिना लॉर्ड के जीत के जाएगी और अपना जो विगुल है, जो अपना परचम है, लहराएगी और अपना आगाज करेगी सेमीफाइनल्स की तरफ बढ़ने का। फाइनली यहाँ पर बेस खत्म होता हुआ और यहाँ पर मैच को जीत लिया हमारी टीम सेल्सियस स्पोर्ट्स ने। बहुत ही शानदार मैच था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था दोनों टीम्स के बीच में। और लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो हमारी टीम रैंडम्स है वो यहाँ पर एक डॉली चाय वाले जो थे हमारे सब कुछ चाय पिला पिला के मार देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। टीम सेल्सियस ने अपना पारा गर्म किया, सेल्सियस का लेवल बढ़ाया और एक अच्छा खासा एपिक कमबैक किया। यप, यू कैन गो फॉर द स्क्रीन। चलते हैं एसएम से, जानते हैं उनके क्या विचार हैं। क्या कमाल का गेम प्ले दिखाया है यहाँ पे सेल्सियस ही स्पोर्ट्स। स्टार्टिंग में शुरुआत में थोड़ा सा चलिए बिछड़े जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं चलिए तारीफ करनी पड़ेगी टीम रैंडम्स की भी, उन्होंने स्टार्टिंग अच्छी की थी। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा वहां से थोड़ा सा गेम उनके हाथ से छूटा। डॉली चाय वाला जो स्टार्टिंग में भाई सबको चौको दे रहे थे, लास्ट में शायद उनके साथ थोड़ा सा उलट पुलट हो गया। चाय जो है थोड़ी ज्यादा गर्म हो गई और बाहर आके निकल गई, इस तरह से कह सकते हैं। एंड सेल्सियस जिस टीम ये आगाज कर चुकी है, हमने कई बार इनको देखा ये सेमीफाइनल्स में खेलती हुई दिखी हमने इस टीम को फाइनल में भी देखा है। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में ये भी शामिल करते हैं अपना नाम, और वो दिखाया है उन्होंने पहले मैच में। हालांकि अभी एक और मैच उनको जीतना है अपने आप को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला है। पहला अंक आप अर्जित कर चुके हैं, अगर एक और ये मैच है वो आप जीत के जाते हैं यहाँ पे तो आप पहुंच जाएंगे अगले राउंड के लिए। रैंडम्स को ये मैच जीतना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब यहां से एक गलती और उनका सफर ईस्टर्न एज सीजन 2 में यहां पे समाप्त हो सकता है। तो वो नहीं चाहेंगे कि इतने जल्दी उनका सफर जो है समाप्त हो जाए। तो वो जिस आगाज से उन्होंने गेम की शुरुआत की थी, अब वो चाहेंगे कि अगले मैच में जब वो आए तो जो आगाज से गेम की स्टार्टिंग की गई थी, शुरुआत की गई थी, उसी आगाज के साथ जो है गेम को अंतता की तरफ लिया जाए। तो वो उनकी रणनीति रहने वाली है। कहीं ना कहीं उनको देखना पड़ेगा कि अब किस तरह से जो है गेम हाथ से छूटा, हाथ से फिसला, इस तरह से फिसले ना। क्योंकि जो बात करें तो आरबी में आपका ध्यान दोहराना चाहूंगा कि जब तक लॉर्ड का आगमन हुआ, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 8 मिनट तक तो टीम रैंडम्स जो है एकदम अपर हैंड रखे हुए थे। पलड़ा उनका काफी भारी था। हालांकि किल की बात करें तो 5 का डिफरेंस था, ज्यादा नहीं था। बट आप पुश की बात करें तो वो ज्यादा आक्रोश के साथ जा रहे थे, रूबी को बार बार पकड़ा जा रहा था। लास्ट में तो रूबी ने कमाल ही कर दिया। फिर वो 1v2 क्या कमाल का था, वहां से उन्होंने गेम को पकड़ा कि लॉर्ड के बाद से ना गेम पलटा। शुरुआत में तो यहाँ पे हमने देखा सेल्सियस दबाव में थी, तो वही चीज रहता है कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट था, आपको पता है कि आप गेम चेंज कर सकते हो, और उन्होंने करके दिखाया। तो क्या क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो रैंडम्स का विजय रथ आगे बढ़ा था अब वो वापस वैसे ही आगे बढ़ाए? इसके लिए रैंडम्स को सबसे पहले अपने जो उन्होंने गलतियां की छोटी छोटी उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वो अपनी मेज को उतना अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और सबसे बड़ी चीज मुझे उनकी पिक्स थोड़ा सा ऑफ लग रही थी, क्योंकि लास्ट में रूबी 1v2 में बड़े प्यार से उसने हैंडल कर दिया। उसने आरलॉर्ड को भी मार दिया था, वेक्साना को भी मार दिया था, जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि आरलॉर्ड के पास अच्छा खासा स्टन है, वेक्साना के पास स्टन है, दोनों अच्छा खासा डैमेज डील करते हैं। तो वहां पर एटलीस्ट मार नहीं सकते थे रूबी को, बट स्केप करना पॉसिबल था। बट वहां पर स्केप नहीं हो पाए। जहां पर वेक्साना और हमारा जो आरलॉर्ड था दोनों मरे, उसकी वजह से गेम बिल्कुल उनके हाथ से निकल गया। टॉप साइड पे वो मर गए, बॉट साइड से बाकी हमारे जो माइनोटॉर थे और अल्फा थे वो मर गए। बेचारा हमारा जो वुल्फ गाय था, द रॉजर था, वो अकेला रह गया। और वो डॉली चाय वाला अपनी चाय के टपरी को बेस पे लगा के बैठ गया। कोशिश उसने पूरी की सब कुछ चाय फेंक फेंक के मारा जाए, और जब कहते हैं ना किस्मत में नहीं होता है तो ऐसे ही होता है।
बेस्ट ऑफ लक। हमारे जो रैंडम से नेक्स्ट मैच फिर से वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ 3 का स्टिल आपके पास चांस है, अगर ये मैच जीतते हैं तो कांटे की टक्कर हो सकती है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक कमबैक देखने को मिलेगा रैंडम की तरफ से, एक अच्छी खासी टीम फाइट देखने को मिलेगी दोबारा। उनकी कोशिश यही रहेगी कि इस मैच को जीत जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट मैच क्या होता है। एंड इसी के साथ हम एसएम से पूछना चाहेंगे, सबसे अच्छा आपको किसका गेम प्ले लगा? देखिए गेम प्ले की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि अच्छा गेम प्ले दिखा रहे थे। रॉजर जो है काफ़ी प्रभावित कर रहे थे। वो देखिए किल उनके पास कितने हैं वो मैं इनको ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। मैं वो बात करूँगा कि जब हमने रूबी को देखा और रूबी के साथ वो फाइट ले रहे थे, वो देख रहे थे कि वो फाइट में इतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। रूबी से 1v1 में वो हार रहे थे। फिर वो क्या कर रहे थे, पीछे आ रहे थे थोड़ा। रूबी उनको जैसे कि हमारे बॉयको थे, वो उनको पकड़ने के लिए जा रहे थे। उनको लग रहा था कि वो बीट कर देंगे और ऐसा 2 से 3 बार हमने देखा कि उस चक्कर में वो फँसते हुए दिखे। तो एक रणनीति इनकी अच्छी थी एंड काफी प्रभावित किया यहाँ पे लिंग ने अपने गेम प्ले के साथ भी। हालांकि रूबी ने भी अच्छा खेला बट मैं उनके ऊपर आऊंगा, उससे पहले बताना चाहूंगा लिंग जो हमने देखा टर्टल को स्टील किया। वो आ रहे थे, वो परेशानी क्रिएट कर रहे थे। कई बार हमने देखा ब्लू बब भी इन्वेड होता हुआ लिंग की तरफ से। तो जंगल में एक अच्छा काम कर रहे थे, वही कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट निकल के आ जाता है। और स्टार्टिंग से ही ये हमको देखने को मिल रहा था, ऐसा नहीं कि जो गेम पलट हुआ तब से हमने लिंग का गेम प्ले देखा। वो स्टार्टिंग से इस तरह गेम प्ले दिखा रहे थे। हालांकि उनकी टीम जो है शुरुआत में मार खा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने देखा कि टीम सेल्सियस की तरफ से फर्स्ट ब्लड जो है वो निंग ने निकाला। तो फिर वही चीज रहता है कि आपको पता है कि आपका एक प्लेयर कर रहा है, बाकी टीम को कॉन्फिडेंट है जैसे गेम आगे बढ़ेगा हम लोग जो है इस गेम के अंदर अपना कब्जा करता हुआ दिखेंगे। तो ये कमाल का जो भी था समीकरण उनकी तरफ से मस्त देखने को मिल रहा था। एंड मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा वापस उनके लिए 3000 डायमंड्स का गिव अवे चल रहा है। उनको कुछ नहीं करना है, बस पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ स्ट्रीम पे बने रहना है, स्ट्रीम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और स्ट्रीम पे कमेंट करते रहिए, अपने फेवरेट टीम का नेम लेते रहिए। एंड आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज हो सकती थी जो इन टीम्स को ध्यान रखना चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी रणनीति हो सकती थी जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी? आपके जो भी विचार है, आपके जो भी सुविचार है, वो हमारे साथ कमेंट में बताते रहिए और हम आपके साथ लौटते हैं वापस छोटे से एक एक मिनट के ब्रेक के बाद। ब्रेक ब्रेक ब्रो।
वापस आ चुके हैं हम आपके बहुत ही इंटरटेनिंग टूर्नामेंट ईस्टर्न एल सीजन 2, जहां पर जो अभी मैचेस हो रहे हैं वो है रैंडम्स वर्सेस सेल्सियस। जो लास्ट मैच था बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अर्ली मैच में हमारे रैंडम्स ने डोमिनेट करके रखा था सेल्सियस के ऊपर, बट सेल्सियस ने अच्छा खासा एपिक कमबैक किया और वन शॉट में विदाउट लॉर्ड मैच खत्म कर दिया एसएम। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच था एंड सच में मुझे एक्सपेक्टेशंस थी रैंडम से, बट उन्होंने अर्ली गेम में एक्सपेक्टेशन से बढ़ के काम किया। लेट गेम में थोड़ा सा चोक कर गया। अगर लेट गेम में संभाल ले जाते, अगर लेट गेम में थोड़ी सी जो गलतियां उन्होंने की उसको अवॉइड करते तो बड़े प्यार से वो ये मैच जीत सकते थे। और शायद उन्हें अभी उन्हीं गलतियों पे काम करना पड़ेगा, थोड़े से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे और फिर से वापस आके सेल्सियस को एक अच्छा खासा टक्कर देके ये मैच जीतना पड़ेगा, तभी हमें बेस्ट ऑफ 3 का थर्ड मैच देखने को मिलेगा। क्या लगता है थर्ड मैच होगा आज? देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन चलिए हमारे पास आ चुके हैं गेम की जो रिजल्ट है। तो आप जो बोल रहे थे ना कौन कैसा खेला होगा, देखिए तो अभी रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। और जो हम बात कर रहे थे लिंक की, क्या प्रभावित गेम प्ले दिया है उन्होंने। एंड रॉजर एक दिमागी गेम प्ले दिया था उन्होंने। डॉली चाय वाला चलिए प्रभावित किया था अपनी टीम से भी उन्होंने। एंड बात करें सेल्सियस की, तो एक पूरा टीम योगदान दिया है। टेरिजला चलिए इनके ऊपर ध्यान हमारा गया नहीं, बट इन्होंने भी एक कमाल का गेम प्ले दिया। एंड जास का आप बात कर रहे थे उनकी तरफ से, चलिए कामेहामेहा, तो उसके लिए कमाल का गेम प्ले पूरा रहा उनकी तरफ से भी। 18 किल बटोरे उन्होंने और रैंडम्स ने जो है 13 किल निकाले हैं। तो चलिए आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने इक्विपमेंट है, तो आपकी जो एक्सपर्ट एडवाइस है ना वो इसके बारे में क्या कहती है? देखिए जो लास्ट मैच था ना वहां पे बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, स्पेशली जो अर्ली गेम में डोमिनेशन था वो मुझे इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज सेल्सियस का नाम है। मैंने रैंडम्स को उतना ज्यादा नहीं सुना है, बट मैंने सेल्सियस को हर दूसरे टूर्नामेंट में देखा है। लेजेंड अनलीस्ड में देखा है, मॉनसून में देखा है, उससे पहले जो एक टूर्नामेंट हुआ था वाइट फेदर में उसमें भी सेल्सियस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो सेल्सियस एक ग्लोबल लेवल की टीम है और हर टूर्नामेंट में एक अच्छा खासा रेपुटेशन बना के ही इनका रहता है। इन्होंने टूर्नामेंट जीते भी हैं। रैंडम्स का मुझे उतना अच्छा वो नहीं था, आइडिया नहीं था कि कितना अच्छा खेलते हैं, बट उन्होंने जो अर्ली गेम में गेम प्ले दिखाया ना, आई वाज शॉक्ड। जो उन्होंने फर्स्ट किल निकाला उसके बाद इनका जो गेम खराब हुआ ना,
इनका जो हाइपर था उसके रेटरी टाइमिंग्स थोड़े से बैड थे एज कम्पेयर टू लिंक। लिंक का रेट्रीब्यूशन परफेक्ट था, चाहे वो टर्टल पे हो चाहे वो लॉर्ड पे हो, हर टाइम बंदे ने अपनी रेट्रीब्यूशन परफेक्टली यूज किया, जिसकी वजह से उसकी टीम को एक एडवांटेज धीरे 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 मिलता रहा। ओवरऑल अगर हम हाईएस्ट किल्स की बात करें तो लिंक ने 7 किल्स सिक्योर किए, 9 डेथ हुई है जो थोड़ी सी ज्यादा है। इसका रीजन ये है अर्ली गेम में लिंक कुछ कर नहीं पा रहे थे, इन्होंने जो भी किल्स बटोरी है वो लेट के ऑलमोस्ट 6-7 मिनट्स में बटोरी है। अर्ली गेम्स में इतना ज्यादा हमें गेम प्ले देखने को नहीं मिला था इनकी तरफ से, बट लेट गेम में इन्होंने कवर कर दिया। तो वही चीज होती है, अगर आप अर्ली गेम में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो लेट गेम में अगर आप कवर कर देते हैं ना तब भी आपका स्कोर अच्छा हो जाता है। ओवरऑल स्कोर की बात करें 8.4 है जो उनकी टीम में हाईएस्ट है अर्ली गेम में चोक करने के बाद भी। तो यही कहते हैं ना, अंत मैटर नहीं करता, मतलब आरंभ मैटर नहीं करता, हमेशा अंत मैटर करता है। तो आप स्टार्टिंग कैसे भी करें, आपका जो खत्म होता है ना, जब जैसे आप चीजें खत्म करते हैं लोगों को ये याद रखते हैं, आपका स्ट्रगल कोई याद नहीं रखता, आपका सक्सेस याद रखता है। तो यहाँ पे लिंक का सक्सेस को याद रखा जाएगा कि उसने इस मैच में हाईएस्ट स्कोर रन किया 8.4 का और एमवीपी हुए हैं अपनी टीम के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट मैच हमारा कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं इस बार जो हमारी रैंडम से कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं। अपना जो उनका आर्सेनल है, जो उनका पिटारा है, उस पिटारे में से ऐसा कौन सा शस्त्र निकालेंगे जो इन्हें सेल्सियस के अगेंस्ट एक अच्छी खासी विक्ट्री दिलाने में काम आएगा। कुछ ही देर में हमारा बैन स्टार्ट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से दोबारा हमें हीरोज देखने को मिलने वाले हैं। ब्रैकेट्स यहां पर आ चुके हैं। ब्रैकेट्स की बात करें, जो अभी सेल्सियस और रैंडम्स में जीतेंगे वो जाएंगे सेमीफाइनल्स, जिनका मुकाबला होगा हमारे सेकंड मैच के विनर। सेकंड मैच में A1 सेंटिनल्स एंड द लफू काबी। लफू काबी इज रियली रियली गुड टीम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी की 4 टीम्स की बात करना चाहूंगा, द एलिमिनेटर्स, जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 टूर्नामेंट जीत के अपना परचम लहराया हुआ। उसी के साथ हैं स्टेप ब्रोज और एबीएम। एबीएम को कौन नहीं जानता भाई, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। इनके जो एपेक्स हैं वो ऑलरेडी ग्लोबल परफॉर्म करके आ चुके हैं। लास्ट में श्री का मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता हूं। बट आज के जो मैचेस हैं सारे बैक टू बैक, जो हमारे 4 मैचेस हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइंग है और जो कंपटीशन है वो एक अलग लेवल का होने वाला है आज की टीम्स के बीच में। क्या विचार है आपका, कौन जाएगा सेमीफाइनल्स में और एक वाइल्ड गेस करेंगे फाइनल कौन जीतेगा? सेमीफाइनल छोड़ो, देखते हैं आपका गेस कितना ज्यादा एक्यूरेट रहने वाला। कौन सी 2 टीम्स होंगी जो हमें फाइनल में देखने को मिल सकती हैं इन 8 टीम्स में से? देखिए फाइनल्स का अभी से हम नहीं बताएंगे ऐसा, क्योंकि मैं किसी एक टीम की तरफ झुकना नहीं चाहता हूं अभी के लिए। वैसे जैसे आपने बताया गैस गैस ठीक हो सकता है कि चलो एक तरीके से गैस करने जाए, कहीं ना कहीं अब फाइनल में ना हमको एबीएम एंड लफू का भी देखने को मिलेगा और शायद से, क्योंकि एलिमिनेटर जो है वो भी अच्छी टीम है, उन्होंने भी एबीएम को हराया है। तो कुछ भी हो सकता है अगर वो दोनों सेमीफाइनल में भी टकराते हैं तो देखिए ये बात की बात है, बहुत कुछ होगा। लेकिन चलिए मैच की तरफ बढ़ चुके हैं। आज का जो दूसरा मैच है वो चलिए हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और बैन की बात करें तो मेटा बैन वापस से देखने को मिल रहा है। बैन हो चुके हैं चिप, बैन हो चुके हैं रूबी दी, उसके साथ 2 और डैंक भी बैन हो चुके हैं जो बहुत परेशान करते हैं। हाई लोज जो है वो काफी परेशान करता है, वो भी बैन हो चुका है। दोनों एनोइंग बैन है, जैसे लॉलीटा है वो आपका प्रहार आपके ऊपर रिटर्न कर देती है। तो चलिए उनको भी बैन करना एक सही, जैसे हमारे आरवी बता रहे थे, तो चलिए वो भी बैन हो चुका है। तो 4 बैन तो आ चुके हैं और कहीं ना कहीं एक लिंक का पैक देखने को मिल रहा है, तो वापस से प्रभावित कर सकते हैं क्या? इस बार सेलेसियस को नहीं मिलेगा तो वो लेके जा चुके हैं शायद रैंडम। आरवी जो आप ये पिक्स एंड बैन्स हो रहे हैं उनके बारे में वापस क्या थॉट है आपका कि जो लिंक ओपन रखा गया तो लिंक फटाक से उठा लिया गया है? एक्चुअली यहाँ पर ऊपर के जो नेम्स हैं वो थोड़े से मिसमैच हैं। लेफ्ट साइड पे हमारी सेल्सियस ही और सेल्सियस को दोबारा यहाँ पर 0-2 हमारे लिंक खेलेंगे, ठीक है। दूसरी साइड हमारे रैंडम्स ने यहाँ पर बैन कर दिया रूबी को। उनको पता है कि लास्ट मैच में रूबी की कितनी की वजह से उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, इसीलिए उन्होंने रूबी बैन कर दी है। पिक्स की बात करते तो यहाँ पर हमारी जो सेल्सियस स्पोर्ट्स है उनके पास अभी भी बहुत सारे हीरोज ओपन है जिसके साथ वो जा सकते हैं। यहाँ पर टेरिजला ओपन है, लास्ट मैच में टेरिजला ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो शायद यहाँ पर हमारे सेल्सियस से वापस टेरिजला के साथ पिक करना चाहेंगे। यहाँ पर सेल्सियस थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपने हीरोज पिक नहीं किए। ऐसा लग रहा है कि उन्हें यहाँ पर एक अच्छा खासा हीरो सोच समझ के पिक करना पड़ेगा हमारे जो लिंग है उनके लिए। और फाइनली हमें जास्क नेक्रोमेर लास्ट गेम में बैन हुआ था और एडिथ लास्ट गेम में बैन हुई थी, बट यहाँ पर हमें दोनों देखने को मिलने वाले हैं। दोनों ही भाई बहुत ज्यादा अग्रेसिव खेलते हैं, बहुत ज्यादा इनका ऑफेंस डिफेंस दोनों अच्छा, इनको मारना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसका रीजन ये है
कि अगर हम जहाज की बात करें तो अगर पॉइंट एचपी पे है या भागने की कोशिश कर रहा है, उसका अल्टीमेट अवेलेबल है तो बचने के लिए अपना अल्टी यूज कर देता है, और उसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ेगा कब इसका अल्टी खत्म होगा, फिर मैं इसको किल करूंगा। दूसरी जगह हमारे पास जो ईडिथ है 1v1 1v2 फाइट्स में बड़े प्यार से ओपोनेंट्स को हैंडल कर सकती है एक थोड़ा सा अपर फार्म लेने के बाद। तो यहाँ पर पिक्स बहुत शानदार है रैंडम्स की तरफ से। अभी सेल्सियस को यहाँ पर थोड़ा सा अपने पिक्स को लेकर सोचना पड़ सकता है। रॉजर यहाँ पर बैन हो चुका है, ऐसा लग रहा है हमारे सेल्सियस को लास्ट मैच में रॉजर ने थोड़ा सा ट्रबल किया था, इसलिए उनको बैन कर किया जा रहा है और रिस्क नहीं लिया जा रहा है। इसी के साथ जैसा कि मैंने कहा था शायद हमें टेरिजला वापस देखने को मिले, और टेरिजला हमें देखने को मिल चुका है टीम सेल्सियस की तरफ से। लूनक्स हमें यहाँ देखने को मिलने वाले, लूनक्स एक अच्छा पिक है जहाज को काउंटर करने के लिए, स्पेशली ईडिथ को भी अच्छा खासा डैमेज देती है। तो गेस करना चाहेंगे नेक्स्ट क्या पिक होने वाली है हमारे रैंडम्स की तरफ से? देखिए हैरिथ एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है लूनक्स के अगेंस्ट में, क्योंकि उसके पास स्पीड रहता है, तो उसकी वजह से लूनक्स को थोड़ा-सा मुसीबत झेलना पड़ सकता है उसके सामने। एंड हायाबुसा वो भी एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, क्योंकि उसके पास जो अल्ट रहता है, उसकी मदद से जो है लूनक्स के अंदर अपना जो है समावेश कर देता है, तो वो काफ़ी फ़ायदा रहता है। एंड हैरिथ जो है वन ऑफ द गुड पिक है लूनक्स के अगेंस्ट में, अगर आप देखने जाएँ तो। वो वैसे ओपन है, तो फिर अभी कहीं न कहीं लग नहीं रहा है कि वो हैरिथ की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमको इदित एंड जास का जो है पिक देखने को मिल चुका है। कहीं न कहीं वो भी ऐसे हीरोज़ है जो इनको परेशान करने में थोड़ी-सी कामयाबी हासिल करेंगे ज़रूर, लेकिन लूनक्स ऐसा हीरोज़ है जो एदित हो गया या फिर एक्सबोग हो गया, उनको मेल्ट करने के लिए कमाल का ऑप्शन रहता है इनके पास। तो देखेंगे उसका किस हिसाब से वो प्रयोग करते हैं इस युद्ध के अंदर। काफ़ी देखना पड़ेगा कि सेल्सियस ई स्पोर्ट्स जो है, वो चौंका देने वाले गेम प्ले के साथ हमको दिखते ज़रूर है। हमने गॉड का पिक देखा था, वो थोड़ा-सा लगा, पर उन्होंने जिस हिसाब से उसका उपयोग किया है, प्रयोग किया है, वो कमाल का था। मिनोटॉर चलिए इस बार रोका जाएगा उनको, अरोरा को बार-बार बैन किया जाता है और जुक्सिन भी उनके साथ बैन होते ही हैं। अभी कौन से 2 बैन ऐसे होंगे जो हमको शायद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी आप हाया देखें तो हाया ओपन है, तो क्या वो रैंडम्स के लिए हायाबुसा को छोड़ेंगे या तो फिर उनको बैन किया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि हाया क्या आज पिक होगा या फिर अभी उसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही है? देखिए हाया एक अच्छा ऑप्शन यहाँ साबित हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता ये हाया के साथ जाना चाहेंगे। यहाँ पर हमें एक और थोड़ा से टैंकी हीरोज देखने को मिल सकते हैं टीम और सेल्सियस की तरफ से। उन्होंने अभी यहाँ पर सिर्फ टेरिजला पिक किया, तो टेरिजला उतना ज़्यादा टैंकीनेस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा अपनी टीम को, इसीलिए यहाँ पर एक हमें और टैंकी हीरो देखने को मिलेगा सेल्सियस की तरफ। अगर हम बात करें रैंडम्स की तो उन्होंने ऑलरेडी 3 टैंकी हीरो मैं बोलूंगा। एक्सबॉग भी एज अ टैंक काम कर सकता है, ऊपर से एडिथ है और एडिथ के साथ मैक्रोमेर है। यहाँ पर इन्हें कभी पॉइंट डैमेज की तरफ जाना पड़ सकता है, एक अच्छा खासा डैमेज डीलर की तरफ जा सकते हैं। एंड अगर ये उसके साथ जाते हैं, जैसा आप कह रहे थे हाया के साथ जाते हैं, तो हाया के साथ जाते हैं और हाया सुन ली उन्होंने भाई, सुन ली। आप आपकी बातें सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें गाइड कर रहे हैं कि भाई पिक कर लो तुम हाया, और रैंडम्स ने यहाँ पर हाया पिक कर लिया जो हमारा निंजा बॉय है। अभी हमारा निंजा बॉय थोड़ी सी दिक्कत करने वाला है हमारे टीम रैंड सेल्सियस को। बार बार कंफ्यूजन हो रही है नेम की वजह से। लेफ्ट साइड में टीम सेल्सियस है, राइट साइड में रैंडम है, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत होने वाली है और हमें डबल मेज देखने को मिल रही है टीम सेल्सियस की तरफ से। इसी के साथ हमें ग्रोक देखने को मिलेगा। ग्रोक का मतलब मैं हमेशा तुमको बताता हूँ, ग्रोक का मतलब अर्ली गेम। यहाँ पर सेल्सियस की पूरी कोशिश रहेगी अर्ली, मतलब स्टार्टिंग के 10 मिनट में मैच को खत्म किया जाए। और जो हमारी टीम रैंडम से ये लेट गेम हीरोज की तरफ जाते हुए, एडिथ लेट गेम है, हायाबुसा मिड टू लेट गेम है, हमारे जो एक्सबॉग है इनका जो असली डैमेज आता है वो मिड टू लेट गेम में आता है। सेम गोस फॉर द जास। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। जो हमारी सेल्सियस होगी वो मैच को खत्म करने की कोशिश करेगी, और जो हमारे रैंडम्स होंगे ये मैच को लेंथी करने की कोशिश करेंगे। फाइनली द जंपिंग जपैक गाय, द बाउंसिंग बॉल कुफरा आ चुके हैं। कुफरा यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत बन सकते हैं हमारे लिंक के लिए। उनको डैश मारने का उतना ज्यादा मौका नहीं मिलेगा जितना वो चाहते हैं। फाइनली हमारी सारे पिक्स हो चुकी है, दोनों टीम्स ने अपने अपने हीरो फाइनलाइज कर लिया और इन्हीं हीरो के साथ वो रणभूमि में उतरने जा रहे हैं, एक अच्छी खासी फाइट प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और कुछ ही क्षणों में हम प्रवेश कर जाएंगे लैंड ऑफ डॉन में। आ चुके हैं हम लैंड ऑफ डॉन में, 1 मिनट का हो चुका है समय समाप्त। दोनों टीमें अपने जंगल में मंगल करती हुई, अपने जो क्रैब हैं उनको मारती हुई और फाइट की तरफ बढ़ती हुई। हायाबुसा ऑलरेडी लेवल 4 हो चुके हैं, लिंग अभी लेवल 3 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेवल 4 नहीं हुए। और फर्स्ट ब्लड सिक्योर कर लिया हमारे एक्स बॉग ने टेरिजला के ऊपर। यहां पर ऐसा लग रहा है कि जो हमारे टेरिजला है उसका ट्रू डैमेज थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। हमारे सॉरी एक्सबॉग का ट्रू डैमेज थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है टेरिजला के अगेंस्ट। मेरा पहला क्वेश्चन पूछने से पहले ही हमें फर्स्ट ब्लड का देखने को मिल चुका है भाई। तो चलते हैं वापस एसएम से, जानना चाहेंगे यहाँ पर जो डोमिनेशन हमें देखने को मिल रही है टीम रैंडम्स की तरफ से। उन्होंने फर्स्ट ब्लड सिक्योर किया, आगे बढ़ रहे हैं, अर्ली गेम से दोबारा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कैसा होने वाला है?
चलिए कैसा तो यहाँ पे गेम प्ले तो कमाल का है। चलिए उछलते कूदते हुए वापस अपनी तलवारें बिछाई गई और किल भी निकाला जाएगा। लिंग वापस से उसी तरह का गेम प्ले दिखा रहे हैं, एक बार मारेंगे और एक बार मरेंगे वाला गेम प्ले आ रहा है। चलिए टर्टल आ चुका है, कछुए का आगमन हो चुका है और टर्टल के लिए जा चुके हैं हमारे सिनोबी। हायाबुसा जो है चलिए टर्टल को सिक्योर करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वैक्साना वो आ रहे हैं उनको परेशान करने के लिए। इटर्नल गार्ड का चलिए इस्तेमाल किया गया उनकी तरफ से, लेकिन टर्टल नहीं बचा पाएंगे। टर्टल निकालने में कामयाबी हासिल कर लिया हायाबुसा ने सही समय पे। और चलिए ज्वाला फटेगा और लेके जाएगा क्या, लेकिन जास को तैनात थे तो जास को मिल जाएगा। एक्सबॉक्स की तरफ से अच्छी कोशिश की गई, कमाल का गेम प्ले वापस से देखने को मिल रहा है अर्ली गेम। चलिए आपने बोला कि जैसे कि हमने सेल्सियस की बात करें तो वो सेल्सियस जो है वो अर्ली गेम की तरफ जाना चाह रहे हैं और वो भी उनके जहन में है कि यहाँ से जो दूसरा अंक है वो लेके उनका सफर जो है आगे लेके जाए। लेकिन रैंडम्स वो जिस हिसाब से लास्ट गेम की उन्होंने शुरुआत की थी वो वापस से उस हिसाब से यहाँ पे शुरुआत देखने को मिल रही है। लेकिन वही सवाल निकल के आता है कि क्या यहाँ पे इतिहास वापस दोहराएगा जो पहले गेम में हुआ था, क्या वो वापस दूसरे गेम में होगा आरवी? देखिए पहले गेम में भी लिंग ने लास्ट में जाके पूरा बदल दिया था। यहाँ पर हाया ने अल्टीमेट यूज कर दी थी, वेक्साना को पकड़ना चाहते थे, पॉइंट एचपी के साथ भागना पड़ेगा, पीछे से लिंग आ चुके पकड़ना चाहते हैं। हाया की जान खतरे में भागने की पूरी कोशिश, इसी के साथ किल सिक्योर कर लिया। हाया भैया यहाँ पर शहीद हो चुकी है। कुफरा यहाँ पर है, जास यहाँ पर है, डैमेज देने की कोशिश की जा रही है। एक्सबॉक यहाँ पर आ गया और इसी के साथ हमारा ज्वालामुखी फटने वाला है, फटेगा और अपने साथ एक किल लेके जाएगा। नहीं लेके जा पाएंगे, पॉइंट एचपी के साथ सर्वाइव करते हुए पीछे से टेरिस लाइव अल्टीमेट यूज किया और हमारे साथ डायनामाइट बॉय को यहां पर शहीदी का सामना करना पड़ेगा। डायनामाइट बॉय हमारे शहीद हो चुकी है। बॉट लेन में थोड़ी सी कश्मकश देखने को मिल रही है। हमारे जो कुफरा है यहां पर जंप करने की तैयारी, रिकॉल नहीं, जंप नहीं करेंगे, रिकॉल करके घर जा चुके हैं, अपना एचपी भर के आएंगे, थोड़ा सा खाना पीना खा के आएंगे, सेहत बना के आएंगे वापस इस रणभूमि में लड़ने के लिए। जो एडवांटेज था हमारे रैंडम्स के पास, 2 किल्स की लीड थी, वो यहां वापस बराबर हो चुकी है। फार्म डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोनों टीम्स के बीच में, तो ये यहां पर दोबारा एक बराबरी का मुकाबला। और जो हमारी टीम सेल्सियस थी अर्ली गेमिंग एजेस दिखाती हुई दिख रही है। एक्सबो का ट्रू डैमेज बहुत ज्यादा इफेक्टिव पड़ रहा है, स्पेशली लिंक के ऊपर भागना पड़ रहा है। वहां पे वो मॉन्स्टर को लेने गए थे बट वहां पर मॉन्स्टर की जगह उन्हें अपनी एचपी का खामियाजा भुगतना पड़ा। दोबारा हमारे कछुआ महाराज पधार चुके हैं। कछुआ महाराज पे एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिल सकती है, कोशिश पूरी की जा रही है। ईडिथ यहाँ पर है, रोम कर रहे हैं, यहाँ पर कुफरा है, उसी के साथ झास्क भी तैनात है। क्या हमारे ग्रुप यहाँ पर अपने टीम को टर्टल दिलवा पाएंगे एसएम? चलिए कोशिश बुरी, लेकिन उससे पहले टीम फाइट का आगाज हुआ। एक्सबॉक्स चलिए गए जरूर है, ज्वाला फटेगा और किसी को लेके डूबेगा क्या? चलिए इस बार लेके जाएंगे। वेक्साना को यहाँ पे खदेड़ा गया है। इटर्नल गार्ड का उनकी तरफ से इस्तेमाल देखने को मिला था, लेकिन उतना उपयोग देखने को मिलेगा नहीं। खुद जा चुके हैं लेकिन उनका गार्ड तैनात है, बट सही समय पे यहाँ पे आए हैं लूनेक्स। चलिए जिस चीज के लिए जाने जाते हैं किल बटोरेंगे और देखते ही देखते यहाँ पे परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। कमाल का युद्ध देखने को मिल रहा है, दोनों टीम की तरफ से बराबरी का मुकाबला है। 5-5 किल हो चुके हैं, 6-6 किल हो चुके हैं अब तो। टर्टल उनको और रुकना पड़ेगा, कछुए के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वापस से दोनों टीम्स आएगी, उनके इर्द गिर्द समाएगी, क्योंकि दोनों टीम की तरफ से एक अप्रतिम गेम प्ले देखने को मिला है। दोनों टीम ने बराबरी का यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप हमारे हीरोज मारोगे, हम आपके हीरोज को मारेंगे। और चलिए उसी के साथ टर्टल के लिए फाइट होती हुई दिखेगी, कछुए महाराज के लिए फाइट होती हुई दिखेगी। खोफरा आए हैं, अपने जंपिंग झपाक से परेशान करते हुए दिखेंगे। सभी योद्धा पधार रहे हैं टर्टल के आसपास, उनके इर्द गिर्द, उनकी आराधना के लिए। क्या हमको देखने को मिलेंगे? लूनक्स चलिए लैंड स्वेप यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। वो लड़ रहे थे इदित से, वो जा चुके हैं एक्सबॉक्स के पास। चलिए एक्सपी लेन में उनका द्वंद्व युद्ध देखने को मिल रहा है, लेकिन इटर्नल गार्ड आएंगे, पेनल्टी जोन पड़ेगा। लेकिन उसी के साथ क्या खूफरा यहाँ पे फंसेंगे? अच्छी कोशिश, लेकिन उनके पास सर्वाइवल एबिलिटी है, निकल के जाएंगे। कम एचपी थी उनकी, फिर भी बच के गए हैं। टर्टल को देखिए अभी भी आने में टाइम लग रहा है। क्या हुई, ये टर्टल ले पाएंगे या तो फिर सीधा लॉर्ड का आगमन देखने को मिलेगा? मुझे ऐसा लग रहा है जो टर्टल फाइट है ऐसी चलती रहेगी और किसी भी टीम की तरफ नहीं जाएगा। बट फाइनली यहाँ पर किल सिक्योर कर लिया और हमारे जो एक्सबॉक्स को अर्ली गेम में एक्सबॉक्स ने किल ली थी, बट अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमारे जो टेरिजिला हैं थोड़ा सा ज्यादा हावी हो रहे हैं। एक्सबॉक्स को 2 बार किल कर चुके हैं, बार बार टाइमिंग बड़ी परफेक्ट रखते हैं। जब हमारे एक्सबॉक्स की एचपी थोड़ी सी लो होती है, पीछे से आते हैं और धप्पा कर देते हैं, जादू की झप्पी दे देते हैं और इसी के साथ हमारे जो एक्सबॉक्स में मारे जाते हैं। फाइनली हमें यहाँ पर टर्टल के पास फाइट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हमारे जो टेरिजिला है, टेरिजिला के साथ लिंग है, वेक्साना और ग्रुप, चारों लोग तैनात है और यहाँ पर उन्होंने फाइनली टर्टल सिक्योर कर लिया है। 7-2 का स्कोर हो चुका है।
फार्म डिफरेंस की यहाँ पर बात करें तो ऑलमोस्ट 1500 गोल्ड का फार्म डिफरेंस है। लीड यहाँ पर अच्छी खासी मिलती है हमारी टीम सेल्सियस को। जैसा कि मैंने कहा था, टीम सेल्सियस अर्ली गेम की पिक्स के साथ आई है और जो हमारी टीम रैंडम्स है वो लेट गेम्स के पिक के साथ आई है। टीम रैंडम्स को यहाँ पर अभी किसी तरह से टर्रेट्स बचाने पड़ेंगे, टर्रेट्स बचाने किल्स की तरफ नहीं जाने, यहाँ पर पकड़ा जाएगा। कुफर ने टर्रेट अंदर गए थे बट वेक्साना यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड्स के लिए कॉम्बिनेशन लगाया, डैमेज दिया। कुफर यहाँ पर शहीद हो चुके, टेरिजला पीछे से आया अल्टीमेट यूज के, बट ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला है। और इसी के साथ दोनों टीम्स पीछे हटते हुई अपने जो इमोशंस है, अपने जो भाव है उनको कंट्रोल करती है। उनको भी पता अभी फाइट लेने का फायदा नहीं है। अभी हमारी जो टीम है यहाँ पर एडवांटेज के साथ नहीं जा सकती है। आप अंडर फार्म चल रहे हैं, आपके पास टर्रेट ज्यादा नहीं है, आप ऑलरेडी 2 टर्रेट गवा चुके हैं, तो यहां पर रिस्क लेना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है टीम रैंडम्स की तरफ से। देखिए, आपका नाम रैंडम है, आपको काम हटके करना पड़ेगा, कुछ अलग करेंगे तभी यहां पर पकड़े जाएंगे। और यहां पर आया उसने अल्टीमेट यूज कर दी, लूनक्स के ऊपर सिक्योर कर लिया है और पीछे से लेंग आए मेगा किल के साथ। लेंग की बात करना चाहेंगे, 5-1-2 का स्कोर हो चुका है लड़के का। देखिए, आपके अगर जिंदगी में आपका लिंग सही है तो आपका सब कुछ सही रहेगा, तो लिंक सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर हमारा जो सेल्सियस का लिंक है बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता हुआ अपने टीममेट के लिए। पीछे से यहाँ पर इटर्नल गार्ड फिर से देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा डैमेज मिला है। जास की एचपी लो है, अल्टीमेट यूज करेंगे जास और शायद यहाँ पर जो हमारी टीम रैंडम से किल सिक्योर करने में कामयाब हो जाए। एक्सबॉक्स ने भी अल्ट यूज कर दिया, उसका बेनिफिट नहीं दिखाई देता। पीछे से टेरिजला आ चुके हैं, किल सिक्योर कर लिया। लिंक ने दोबारा अनस्टॉपेबल के साथ आगे बढ़ते हुए, कोई इस लिंक को रोक नहीं सकता। ये अंदर घुस रहा है, मार रहा है, पीट पीट के भगा रहा है सबको। बेस पे 2 किल सिक्योर कर लिए, तीसरे किल की तरफ जा सकते थे बट यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक कर गए। पीछे से हाया आए, मार्कर लगाया और इसी के साथ शट डाउन हो चुके हैं हमारे लिंक। अभी लिंक का जो खाता था वो बंद हो चुका है, उनको दोबारा आना पड़ेगा, सेहत बना के आना पड़ेगा, थोड़ा सा खा पी के आएंगे, फिर से अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहेंगे। ओवरऑल टर्रेट डिफरेंस की बात करें, जो हमारे टीम रैंडम्स है 3 टर्रेट्स गवा चुके हैं बट हमारी टीम सेल्सियस के पास सारे के सारे टर्रेट अलाइव है। सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास ये है। देखिए, ये गेम किल्स का नहीं है, यहाँ पर आपको किल्स के बदले कुछ नहीं मिलने वाला। ये मैच अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको टर्रेट्स लेने पड़ेंगे। आप किल्स 50 ले लीजिए, अगर आप टर्रेट नहीं ले रहे तो मैच खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा हमारी टीम रैंडम्स को। बॉट लेन पे यहाँ पर हमारे हायाबुसा थोड़ी सी यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश करने जाते हैं बट उसका बेनिफिट नहीं होने वाला है। फाइनली हमारे शिव शंभू पधार चुके हैं। एसएम, क्या लगता है किसके पास जाएंगे शिव शंभू? चले शिव शंभू, जैसे आपने बोला उनका आगमन हो चुका है, उनकी महा आराधना के लिए दोनों टीम उनके इर्द गिर्द आती हुई दिखेगी। चलिए, हम जैसे देख पा रहे हैं आराधना की शुरुआत हो रही है, लेकिन उनको बीच में यहाँ पे विघ्न का सामना करना पड़ेगा जरूर, क्योंकि इटर्नल गार्ड का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे टीम सिलिसियस की तरफ से परेशान वो भी करना चाहते हैं। जिस तरह से ये गेम जो है उथल पुथल करता है, सिलिसियस जैसे जैसे ये मिड गेम की तरफ जाता है अपना कब्जा जो है वो करते हुए दिखते जरूर है। क्या अब वो कब्जा कर रहे हैं, वो आगे लेके जाएंगे? पेनल्टी जोन का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है यहाँ पे टेरिजला की तरफ से, लेकिन उनको भी थोड़ा रुकना पड़ेगा, विराम लेना पड़ेगा। जास्क जो है अपना चूजे के साथ, चलिए यहाँ पे शुरुआत की गई है। आराधना की अब हो चुकी है शुरुआत। हाफ एचपी कम करने के लिए दोनों टीम तैयार है, लेकिन वापस रीसेट होंगे। चलिए, वापस से इनके समीकरण बदले हैं, दोनों टीम ने फॉल बैक करना सही समझा है, पीछे हटे हैं। क्या ये लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे हटे हैं या फिर ये कुछ रणनीति के साथ पीछे हटे हैं? चलिए, सही समय पे गए पीछे जरूर है, लेकिन रुके हुए भी एम्बुश का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रोका है, काफी कम एचपी है, लेकिन अपनी टीम को क्या योगदान दिलवाएंगे? जास का अल्ट है, उससे बचना पड़ेगा। लूनक्स, इनके सामने आप टैंक को नहीं रख सकते हो, ये गला देंगे। लूनक्स अच्छा इस्तेमाल अपनी तरफ से देखने को मिलता है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे 1-2-0-2 करते हुए आगे बढ़ते हुए हमारे लीग जो है वो परेशान करते हुए दिख रहा है रैंडम्स को। एक अच्छा विजय रथ आगे बढ़ाते जरूर है रैंडम, लेकिन जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ता है वो थमते हुए दिखते हैं, वो यहाँ पे बिखरते हुए दिखते हैं, ताश के पत्तों की तरह यहाँ पे कुछ ना एक बिखरते हुए दिखे जरूर है। चलिए, लॉर्ड्स लैंड हो चुके हैं, प्रसन्न हो चुके हैं। शिव शंभू पधारने वाले हैं एमएल के देवता टीम सेल्सियस की तरफ से। तो क्या हम मेरे दोस्त आरवी ये लॉर्ड, ये शिव शंभू के साथ वो इस गेम को अंतिम चरणों की तरफ लेके जाएंगे? देखिए, चांसेस बिल्कुल यहाँ पर है। सिर्फ 3 इनिबिटर टर्रेट्स बचे हैं बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये मैच खत्म होगा, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज लॉर्ड तो है, डेफिनेटली लॉर्ड है, बट यहाँ पर अगर कोई रैंडम कोई गलती नहीं करती है, अर्ली फाइट से नहीं लेते हैं, लॉर्ड को आने दो, वेट करो, लॉर्ड को डिफेंड करो, फाइट मत लो। अगर यहाँ पर इन्होंने फाइट ली तो यहाँ पर चांसेस खत्म हो जाएंगे। पकड़ने की कोशिश की जा रही है, डैमेज दिया जा रहा है, टेरिजला को पकड़ना चाहते हैं बट टेरिजला बड़े प्यार से
निकल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर एक्सबॉक्स अंदर घुस रहे हैं, बहुत ज्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। इसी के साथ बिना लॉर्ड को फॉलो किए यहाँ पर फाइट में देखने को मिल सकती है। ग्रुप यहाँ पर मारे जा चुके हैं, एक्सबॉक्स अंदर गए, एक्सबॉक्स ने अल्टीमेट यूज किया और लूनक्स यहाँ पर मारी जा चुकी है। तो फाइनली टीम रेडी, जो हमारे रैंडम्स थे इनको थोड़ा सा एडवांटेज मिला है, 2 किल्स मिली, बट इसी के साथ हमारे हायाबुसा का नुकसान का भी यहाँ पर इनको झेलना पड़ेगा। बॉट लेन पे हमारे एडिट दीदी लॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रही है। लॉर्ड यहाँ पर अकेला बेचारा आगे बढ़ के टरट डिस्ट्रॉय करना चाहता था, बट ऐसा नहीं हो पाएगा और बड़े प्यार से बिना किसी टरट के नुकसान पे जो हमारी टीम रैंडम्स है वो डिफेंड कर लेगी। टॉप लेन पे वहां पर हमारे जो एक्सबॉक्स थे अकेले कोशिश कर रहे थे, बट उनके हाथों से निकल गया और लिंग ने किल सिक्योर कर लिया। दोबारा यहाँ पर लास्ट मैच की तरह चोरी चोरी चुपके चुपके से टरट्स की तरफ आगे बढ़ते हुए जो बॉट लेन से एक इनहिबिटर टरट निकालते हुए सेकंड के टरट की तरफ जाना चाहेंगे, बट टरट से पहले वो किल सिक्योर करना चाहेंगे। अंदर आए और यहाँ पर एक किल लेकर आगे बढ़ते हुए जास यहाँ पर मारे जा चुके हैं। टेरिजला ने यहाँ पर किल सिक्योर कर लिए, 2 लोग यहाँ पर सिर्फ बचे हैं, दैट इज कुफरा और हायाबुसा। ये हमारा निंजा लड़का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पा रहा जितना मैंने एक्सपेक्टेशन किया था। टॉप लेन से टरट जा चुका है, मिड लेन का टरट भी जाएगा और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि बॉट लेन का इनहिबिटर टरट जो है उसको भी निकालने की कोशिश की जाएगी टीम सेल्सियस की तरफ से। मैच यहां पर खत्म नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट खत्म होने वाली सिचुएशन बन चुकी है। मनो जो कहते हैं, आप कहते हैं ना मनोयुद्ध में, मतलब जो मन का युद्ध होता है, जो हम सोचते हैं, वहां पर टीम सेल्सियस ने अपना जो विजय परचम है लहरा चुके हैं। टोटल कंट्रोल देखने को मिल रहा है, टोटल डोमिनेशन देखने को मिल रहा है टीम सेल्सियस की तरफ से। दोबारा यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे ग्रुप के अंदर घुसना चाहते थे, बट थोड़ा सा वेट करेंगे। शिव शंभू आने वाले हैं 38 सेकंड यानी 38 सेकंड में दोबारा हमारे लॉर्ड पधार जाएंगे और वापस वो लॉर्ड के साथ आके इस मैच का खत्म करेंगे, जो शिव शंभू है बेस का सर्वनाश करेंगे। और ये मैच शायद सेल्सियस की हाथों में जाएगा और जो बेस्ट ऑफ 3 का था टूर्नामेंट जो मैच था, 3 मैच होने थे, उसमें से 2 मैच जीत के जो हमारी सेल्सियस थी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बट यहाँ पर अभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे हम हमेशा से कहते हैं कि ये मैच में एक गलती और मैच पलटी, क्या यहाँ पर वो गलती देखने को मिलने वाली है ऐसे हमें? चलिए वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्सियस जो है वो चाहेंगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे टावर की बात करें, आप टरेट की बात करें, तो उन्होंने टरेट गवाए नहीं है। लेकिन मैं आपका ध्यान दोहराना चाहूंगा, देवी और सज्जनों, हमारे बीच पधार चुके हैं इन हैंड स्लॉट यानी रुद्र अवतार में शिव शंभू आ चुके हैं। अगर अभी कुछ करके टीम रैंडम्स जो है इनको प्रश्न करते हैं तो कुछ टावर्स में फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन पेनल्टी जोन का इस्तेमाल देखने को मिल रहा जरूर है, लेकिन लेंग चलिए उनको रोकने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। और देखते ही देखते धराशायी हो चुके हैं एक्सबॉग। अब उनका ज्वाला इनको काम नहीं आने वाला है, निकल चुका है। उसके साथ जास का अपना चूजे के साथ चलिए कोशिश अच्छी कर रहा है, भरपूर कोशिश की जा रही है, पर क्या ये कोशिश काफी होगी? उनको लड़ना है डू और डाई सिचुएशन के लिए, उनके लिए ये परिस्थिति आ चुकी है, करो या मरो। और रैंडम्स अब अगर यहां से कुछ आप नहीं करते हैं तो फिर मौत आपके लिए पक्की है। आपको चलिए आपका विजय रथ आगे लेके जाने के लिए परेशानी झेलनी जरूर पड़ेगी। और इसके साथ लिंक बहुत आगे गए हैं परेशान करने के लिए, कोबरा उनको पकड़ने के लिए। क्या उनको उतनी पॉसिबिलिटीज, चलिए नहीं, उनको रुकना पड़ेगा थोड़ा, भी से उनके साथ जरूर। और उसी के साथ देखते ही देखते हायाबुसा, लेकिन अल्ट कहाँ लगाई आपने? जो अल्ट है वो लग गई थोड़ा सा टैंक के ऊपर गया तो मुसीबत जरूर हुई है अब। लेकिन दोनों टीम पधार चुकी है लॉर्ड के इर्द गिर्द। क्या महा आराधना की शुरुआत होगी? क्योंकि दोनों टीम देखिए वेट कर रहे हैं, लॉर्ड की तरफ कोई टीम बढ़ते हुए दिख नहीं रही है। कोई टीम चाहती नहीं है कि यहां से कोई गलती करे और यहां से मैच पलटे, तो उसी के लिए रुक रहे हैं। लेकिन आप देखिए जास के यहाँ पे फंस सकते हैं, बहुत बड़ी मुसीबत उनके ऊपर, भाग जरूर रहा है लेकिन सही समय पे चलिए अल्ट का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। काफी कम एचपी थी, मौत की मुंह से वापस आए, मौत उनकी दहलीज पे जरूर खड़ी थी। लेकिन मुसीबत हो सकती है लिंक के लिए, क्योंकि हाया वहां पे तैनात है, सही समय पे निकल चुका है। उनके पास एक अच्छा फायदा ये है कि उनके पास संजीवनी बूटी है जरूर, और यानी कह सकते हैं इमोर्टलिटी, उसको कहते हैं हम संजीवनी बूटी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उनको एक योगदान मिलेगा जीवन के अंदर भी, तो वो एक अच्छा फायदा है उनके लिए। लेकिन क्या गेम प्ले दिखाया है बंदे ने, 11 किल अब तक निकाल चुके हैं, 3 बार मृत्यु का सामना जरूर करना पड़ा है, बट अभी भी 16 मिनट का गेम प्ले होने वाला है। लॉर्ड की आराधना के लिए दोनों टीम इंतजार कर रहे हैं क्या आरवी लॉर्ड की आराधना होगी या फिर बिना लॉर्ड के ये मैच खत्म होता हुआ दिखेगा? यहाँ पर मुझे चांसेस परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सबॉक्स अंदर गए और यहाँ पर किल सिक्योर के पीछे से ने जो हमारी वैक्साना दे दी थी उन्होंने अपना सेकंड स्किल का यूज किया और यहाँ पर किल सिक्योर कर लिया हमारे एक्सबॉक्स के ऊपर। लिंक की बात करें जितनी तारीफ करें उतनी ज्यादा कम है, 13 किल्स
12 किल्स के साथ आगे बढ़ते हुए लगातार 2 बार मेगा किल सिक्योर कर चुके हैं, 2 बार अनस्टॉपेबल हो चुका है लड़का, तो इसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। बड़े प्यार से शिव शंभू को प्रसन्न करने में कामयाब हो पाएंगे और अभी जो शिव शंभू है हमारे सेल्सियस की सहायता करेंगे इस मैच को में विजयी भव होने के लिए। अभी ये देखना है कि शिव शंभू कौन सी लेन से आते हैं, टॉप लेन से आते हैं, बॉट लेन से आते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा। उसका रीजन ये अगर टॉप लेन से आएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है हमारी टीम रैंडम्स के लिए, उनको मिनियंस क्लियर करके रखना पड़ेगा। लॉर्ड के साथ अगर मिनियन का प्रेशर आएगा तो ये मैच यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी तरीके से लॉर्ड को रोकना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करिए कि फटाफट जितने मिनियन का प्रेशर हो सके उसे खत्म करिए, जो लेन है उसको फटाफट क्लियर करिए। हमारे नॉक्स भैया ट्रॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनका नेट यहाँ पर लैग कर चुका है, आराम से खड़े हो रहे हैं और गैंग बैंग हो चुका है उनका। 4 लोगों ने पकड़ के पीटा भाई, बुरा लग रहा है मुझे उनके लिए। मतलब चलिए नेट उनका चला गया, बट छोड़ सकते थे, एक भी मारता तो चल जाता, बट 4 के चारों अंदर गए और अपना अपना बदला ले लिया, क्योंकि टेरिजला ने सबको यहाँ पे ट्रबल दिया था, चाहे वो हमारे जाज को, चाहे एडेथ हो, चाहे एक्सबो को, सबको उन्होंने ट्रबल दिया था। इसलिए सबने अपना हाथ साफ कर लिया और ग्रुप ने लॉर्ड के सामने वॉल लगा दी थी। भाई वो तो तुम्हारी टीम से, उनको तो जाने दो, उनके आगे वॉल क्यों लगा दी थी। यहाँ पर हमारे जो लॉर्ड है आगे बढ़ते हुए लिंग यहाँ पर अंदर आए थे, बफ लेना चाहते थे, इसी के साथ एक्सबो का अल्टीमेट पॉपअप हो चुका है। पीछे से लूनक साइकिल सिक्योर करते हुए डबल किल के साथ आगे बढ़ते हुए 2 लोग मारे जा चुके हैं टीम रैंडम्स की तरफ से। 4 वर्सेस 5 की सिचुएशन, सॉरी हाँ 5 वर्सेस 3 की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। लॉर्ड यहाँ पर टीम रैंडम की तरफ से आगे बढ़ता हुआ मिड लेन का यहाँ पर टर्रेट सिक्योर किया जाएगा। वेक्साना यहाँ पर टर्रेट ले लिया, पीछे से यहाँ पर कुफरा है, जंप किया, पकड़ना चाहते थे बट नहीं पकड़ पाएंगे, निकल जाएंगे। इसी के साथ एक और किल हमें देखने को मिल सकते हैं टीम सेल्सियस की तरफ से। डबल किल फिर से हमारी लूनक्स ने अपना जलवा बिखेरा और 2 किल लिया अनस्टॉपेबल के साथ। तीसरा अनस्टॉपेबल हमारे लिंग को मिला और इस मैच को जीत लिया है हमारे लिंग ने। भाई मैं कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं, आपका अगर लिंग अच्छा है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। और हमारे सेल्सियस का लिंग ने बहुत ही शानदार परफॉर्म की। तारीफ करना चाहूंगा मैं लूनक्स की, लास्ट टाइम पे जो लास्ट मोमेंट था, लास्ट के 2 मिनट थे, 1.5-2 मिनट, उसमें उन्होंने बैक टू बैक 2 डबल किल लिए। पहले एक डबल किल लिया, उसके बाद जो बेस पे टीम फाइट हो रही थी उसमें भी डबल किल लिया, तो वो एक्सेप्शनल था। अगर लूनक्स वहां पर मिस कर जाती या चॉक कर जाती तो दिक्कत हो जाती है प्यूकन को। चलते हैं एसएम से, आपका जो फर्स्ट फेवरेट मोमेंट था वो कौन सा था? फेवरेट मोमेंट तो फिर वापस वही रहा है, यहाँ पे रैंडम शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे जाता है इतिहास ने वापस यहाँ पे दोहराया गया है। तो यही चीज रहती है रैंडम्स के साथ कि वो शुरुआत अच्छी कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे गेम अपने चरण सीमा की तरफ आगे बढ़ता है तो फिर उनसे मिस्टेक होती है, उनसे गलतियां होती हैं, और उसी गलतियों के चक्कर में टीम रैंडम्स जो है उनका सफर हमारे साथ यहीं तक समाप्त हो जाएगा। और टीम सेल्सियस जिसका आप बात करते हैं, जिसका आप आगाज करते हैं, आपने देखा है काफी टूर्नामेंट्स के अंदर उनको खेलते हुए, उनको सेमीफाइनल में खेलते हुए, उनको फाइनल में खेलते हुए, एक बार फिर से हमको दिखने वाले हैं ईस्टर्न एज सीजन 2 के सेमीफिनाले के अंदर। अब उनके सामने कौन सी टीम आएगी वो भी एक देखना रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक क्लीन स्विप यहाँ पे कर दिया है कि बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला था, लेकिन पहले 2 मुकाबले ही उन्होंने बोला कि हम जीत के अपने आप को अगले राउंड में लेके जाना चाहते हैं। तो अभी जहां तक मुझे पता है तो मैच होने वाले A1 सेंटिनल्स एंड लफू काबी के बीच में। दोनों धुरंधर टीम मानी जाती है। लफू काबी का रिसेंटली हमने मैचेस देखे हैं, उनकी जो आप बात करते हैं तो वो टीम किस हिसाब से उभर के निकल के आती है, उनके जो प्लेयर्स है वो किस हिसाब से खेलते हैं, हमने देखा है अग्रेशन के साथ भी जाना चाहते हैं और डिफेंसिव भी खेलना जानते हैं, तो किस हिसाब से आज आगे रहते हैं, उनका सामना जो है सेंटिनल्स कैसे करते हैं, वो भी मजा आएगा देखने में। कुछ ही क्षण में हम इस मैच के रिजल्ट्स देखेंगे, इस मैच में गेम प्ले देखेंगे किस तरह से खेले थे। मिलेंगे आपसे कुछ ही समय में, मिलते हैं 1 मिनट के ब्रेक के बाद।
वापस आ चुके हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो लास्ट का मैच था बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जो हमारी टीम रैंडम थी, अर्ली गेम में बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा डैमेज दिया, बट जैसे जैसे मैच बढ़ता गया जलवा वहां पर चढ़ता गया और जो हमारी टीम सेल्सियस थी उन्होंने वापस अपना पारा गर्म किया और दिखा दिया भाई कि हम टॉप टीम है, इतनी आसानी से हम तुमको आगे जाने नहीं देंगे। छोटी मोटी गलतियां हमें देखने को मिली रैंडम की तरफ से, बट फाइनली हमें हमारे जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो मिल चुके हैं। जो हमारी सेल्सियस है वो जा रही है सेमीफाइनल्स में। अभी ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि उनके अगेंस्ट में कौन आने वाला है, और ये जानने के लिए आप लोग कहीं मत जाइए, कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। नेक्स्ट मैच कुछ ही क्षणों में स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए अभी हम जाएंगे, देखेंगे मैच रिजल्ट्स के बारे में, कौन सी टीम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, गलतियां कहां पर की और कौन से हीरोज ने यहां पर गलत चॉइस साबित हुए। यहाँ पर फाइनली हमारे पास आ चुकी है स्क्रीन जिसपे हम देख सकते हैं कि भाई 18 मिनट का गेम था ये, 18 मिनट 23 सेकेंड ओवरऑल। अगर लिंक की बात करें, बैक टू बैक अनस्टॉपेबल, बैक टू बैक किल्स, 13-3-8 का स्कोर है और इस लड़के ने अपनी टीम को विक्ट्री दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लास्ट मैच इसका स्कोर था 8.5, इस मैच में इसका 11.8 है। दोनों टीम में से कोई भी आस पास नहीं भटक रहा है भाई, तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है जब आप इतना अच्छा खेलते हैं ना, ताकि आपके ओपोनेंट में कोई आपके आसपास भी ना भटके ना, तो ये मतलब अलग सा अच्छा फील आता है। कभी कभी अगर मेरे साथ होता है तो मैं अंदर से खुश हो जाता हूँ। ऐसे में आप क्या कहते हैं अगर आप ऐसा होता है आपके साथ कभी तो? देखिए ऐसी परिस्थितियां तो अभी हुई नहीं है, जब होगी तब का देखा जाएगा। लेकिन चलिए उससे पहले मैच के बारे में बात करते हैं। क्या यार गेम प्ले दिखाया वापस से यार, आपके चहेते लिंक जो है वो एमवीपी लेके जाएंगे डेफिनेटली। और क्या ही गेम प्ले देखने को मिला है उनकी तरफ से, उछलते कूदते हुए। और आज तो चलिए पहले गेम ने हमने देखा कि वो शुरुआती गेम में उतना चले, फिर वापस थोड़ा सा बैठ गए, थोड़ा लंबी देर तक बैठे रहे, फिर वापस से उनके गेम के जलवा दिखाया। लेकिन इस वाले गेम में तो उन्होंने सिर्फ जलवा ही बिखेरा है, वो सिर्फ मारते ही गए हैं, एक तरह से कह लो कि खदेड़ते ही गए हैं। और लफू काबे इस बार यार लास्ट टाइम से भी ज्यादा अच्छी एफर्ट्स थी। लास्ट टाइम उन्होंने जब लॉर्ड के बाद गेम छोड़ा तो फिर छोड़ ही दिया था। इस बार उन्होंने लास्ट तक टिके रहे, लास्ट तक वो लड़ने की कोशिश की, लेकिन जो इतिहास है वो वापस दोहराया। सेल्सियस स्पोर्ट्स जो है वो अपने आप को वापस सेमीफाइनल तक पहुंचा चुके हैं। टीम रैंडम्स का जो है वो सफर, माफ करना, यहीं पे खत्म होगा। और टीम रैंडम्स जो है वो अब हमको अगले सीजन में शायद देखने को मिले, लेकिन उनका सफर आज के लिए यहीं पे खत्म हो जाएगा। एंड सेल्सियस जो है वो आगे जा चुके हैं। मोस्टली यार आरवी, लास्ट टाइम आपने पूछा था, इस बार मैं पूछूंगा, आपको किस हीरो ने प्रभावित किया? यार टू बी ऑनेस्ट, जैसा तुमने बोला, मेरा फेवरेट हीरो भाई बहुत ज्यादा अच्छा था लिंग ने, और मुझे जहां तक लगता है कि लिंग ही एमवीपी है अपने टीम्स के लिए। और फाइनली हमारे पास एक अलग सी इंटरेस्टिंग चीज आ चुकी है जिसको कहते हैं एमवीपी। भाई पहली बार टू बी ऑनेस्ट, रियली अप्रिशिएटिंग फॉर द ईस्टर्न एज। बहुत अच्छे इनके ग्राफिक्स है, पहली बार मैं चीज देख रहा हूँ कि कोई टीम ऐसा भी कर रही है। तो एमवीपी की बात करेंगे, 0-2 यहाँ पर हमारे एमवीपी हैं। लिंक खेला था उन्होंने लास्ट मैच में, उससे पहले मैच में भी लिंक खेला था। 11.8 का स्कोर है। किल डेथ की बात करें तो 13-3-8। पहले उन्होंने लगातार, मतलब एक किल स्टार्टिंग में उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उन्होंने लगातार 6 किल्स लिए थे, जिसकी वजह से पहले उन्हें अनस्टॉपेबल मिला, एंड उसके बाद फिर से उनकी डेथ हुई, फिर से उन्होंने किल ली और लास्ट में एक जाके और डेथ का सामना करना पड़ा। अगर उनके हम गियर्स की बात करें तो
सुपर्ब गियर है। लास्ट में उन्होंने जो एडिशन की थी फ्रीज की, सो दैट और टीम फाइट्स में अपने आप को बचा सके और निकलने में उनको कामयाब आ सके, तो उसका उन्हें लेट गेम में डेफिनेटली एक अच्छा खासा एडवांटेज मिला था। आप क्या कहेंगे ऐसे में इस एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के बारे में, जिसने अपनी टीम को एक अर्ली गेम में जो फंसता हुआ दिखाई दे रहा था उसका विजय रथ की कमान संभाली और इस मैच को जीत की तरफ दौड़ाते हुए चले गए? देखिए डेफ़िनेटली कहीं न कहीं एक अच्छा गेम प्ले देखने को मिला उनकी तरफ से, तभी तो लास्ट मतलब वही चीज़ है कि आपको इस हीरो के ऊपर कॉन्फिडेंट है और ये हीरो आपको लगातार मिल गया। पहले मैच में मिला तो पहला मैच आपने जीता, दूसरा मैच में मिला तो दूसरा मैच भी आपने डेफ़िनेटली एक तेज़ी के साथ जीता। एंड जैसे आपने एक इक्विपमेंट के बारे में बात किया, तो इक्विपमेंट में देखिए लाइफ स्टील देखने को मिल रहे हैं और उनके साथ जो फ्रीजिंग आइटम देखने को मिला, तो वो चीज़ होती है कि इनको ये दर्शाता है कि जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो आपको बस फ्रीज़ हो जाना है। और चलिए हमको मिल चुके हैं हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट जो कि है सेल्सियस ई स्पोर्ट्स। तो देवी और सज्जनों हम आपसे मिलेंगे थोड़े से छोटे से एक ब्रेक के बाद। उसमें हम देखेंगे 2 कमाल के प्रतिद्वंदी लड़ते हुए इवन सेंटिनल्स एंड लफू का भी। तो कांग्रेचुलेशंस टू सेल्सियस ई स्पोर्ट्स एंड रैंडम ई स्पोर्ट्स। कोई दिक्कत नहीं है। ये परिस्थिति आती रहती है, ये पहलू है इस गेम का, हार और जीत लगे रहते हैं। आपसे मिलेंगे कभी और किसी टूर्नामेंट में या तो फिर सीज़न 3 में एंड मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद।
Ladies and gentlemen, welcome back. You guys are tuned in at Eastern Edge Season 2. We are bringing you today with the semi-final matches. That would be the top 8 matches where 8 of the teams will be battling it out for a position towards in the finals. With that, we are in the day 1. With that, the matches will be held between Team AI versus Lafu Kabi. Looks like the bans are already done. The pretty standard bans coming in. Looks like the Hayabusa, the Ling, the Lunox. Lunox is also another good contender right here in the mage section, because we all know that she has this light form as well, and even the dark form dishing out damage and a CC free as well. With that, looks like Lafu Kabi are on the blue side and A1 Sentinels are on the red side. Lafu Kabi, they are prioritizing a Phobius right now, and we all know how the Phobius is creating a havoc in the land of Dawn with his infernal evil and the stunts as well. This will be a pretty good pick coming in, but on the other hand, A1 Sentinels can actually counter this out with a Terizla or maybe a Edith in the EXP lane. Highly possible there, but no, I think A1 Sentinels, they have a very different team composition in their hand. It looks like Alice will be going in with a Angela. I'm hoping that the Alice would be a retribution here, because that would be pretty overpowered combo coming in with Angela. Let's see what AI Sentinels have in their store. But look at that team Ala Fukabi, their picks is on. Maybe we will be seeing more of those meta heroes coming in. Maybe a high loss. It looks like the high loss have been banned. Looks like Kaja, high loss, and a task has been banned, which which really made this Zuxian to be open along with the Edith. Zozo going in with an Edith. Okay, strong picks coming in, but where would 4 years go if there's an Edith? And I think to answer that question, Edith would be going towards the Rome and 4 years towards the EXP. This will be a very good combo that we might be seeing. Okay, look, with that, the third, the bands are all set in, the picks are all in. On the other hand, the bands is still A1 Sentinels. They still have a chance to ban out two more heroes, and looks like it will be a Roger, who is a pretty annoying gold laner as well as a jungler. Uh, Roger really has to get his Vorax, and as if he's going for that kind of build, so a Vorax would be a pretty good for him. But let me welcome you guys, Sebastian. Hello, Sebastian. Are you there? Hello, hello. Thank you, Peachy, for welcoming me. Are you excited for today's matches? Yes, Sebastian, I am excited. Look at that, a new team composition that you will be seeing, and Alice as well as Angela coming in. That is pretty new, because Alice is not a meta hero as well as Angela. The support meta has already gone back a few seasons ago, and they are playing it all again. And it actually tones down to the micros and the macros that the team A1 Sentinels have right now. Whoa, Peachy, you're right. I don't think we've ever seen an Alice here in the tournament, right? In this current tournament right now. I think A1 Sentinels are trying to cook something up. And with that, I think Lolita is banned so that Alice's skills will not be used against her, as well as Angela as well. That is highly possible that the Alice could go towards the jungle role, whereas I'm seeing a Mincitar towards A1 Sentinels, and a Mincitar may be a gold as well. I mean, not as well, but he will be going towards the gold. It would be a pretty good picks coming in from A1 Sentinels, I have to say, Sebastian. They are definitely cooking up something, like you said, Peachy, because look at that. They are picking heroes which somehow make sense with their ganking because of their skills as well. So this is pretty new.
I do agree with you. Look at that, the carry going towards. Oh, wait a minute. It is a carry picked up. So that means the Minsitar will not be a gold Minsitar. Maybe a Rome Minsitar. I'm really not sure because right now we will be seeing those spells very quickly and as well as emblems as well. So we might be knowing where Minsitar will be going. But on the other hand, a Rome Minsitar would be pretty good coming in because the dashes coming in from Edith as well as Phobius, it would be stopped with the King's Calling. On the other hand, a carry, pretty strong picks. She's not a very early game hero or early game marksman. On the other hand, she really needs to scale off and be in a very good position where she won't be caught off from the junglers from the side of Lafu. Kabi looks like the junglers would be a Nolan pick coming in here. Okay, strong picks coming in from Mina. Nolan, on the other hand, Sebastian, I have to say, it is a make or break situation. What do you think about that? That is exactly what I was thinking right now. Because look at Lafu Kabi. They have such really, really good picks, especially with the CC coming in from Edith and Phobius, even from Zuxia as well. She is a very annoying mage to go against. So A1 Sentinels really have to counter that stuff because if they do not, they will be able to take the first round home. I do agree with you since this is a best of three. Both the teams will be battling it out for a position in the semifinals. Look at that. The team fight. Picks are already in. Leslie has been taken on the side of La Foucault. Be pretty strong pick coming in. I have to say, Leslie is again not an early hero, not even a mid game hero. She really has to farm it out until the minute 20. It will be a little disadvantage for Team La Fukabi unless Nolan is able to snowball the early game and he's able to get 2 to 3 kills early into the game. And with that, ladies and gentlemen, we are in the land of dawn. This is a match between La Fukabi versus Avon Sentinels. Both the teams are going in strong. Looking at, it seems as though they are trying to go into gank on their gold lane because, as we've said before, look at the gold laners here. They both picked late gamers, so that is going to be a huge problem for both the teams because if one of them fails, especially on ganking in the gold lane, it is going to cost them the whole round as well. So look at that. I think Carrie is in a little bit of trouble because of Leslie's poke abilities. And they're right beside each other. Oh, she didn't know that he was there, but look at that flicker coming in from Carrie. He knew that Kay was there to intercept, but a wonderful flicker coming in. That is true, but on the other hand, Nolan rendering Gusian to not get level 4. He is pretty slow right now. Even the creep has been stolen by Nolan. Mm-hmm. That was a wonderful, I think, retribution coming in to deny that level 4 because, oh my gosh, I think the EXP is in trouble. And the first blood goes to Angela. All right. That is a good comeback coming in from A1 Sentinels as both their flickers and spells have been used as well. And look at that. I think Leslie does take down the carry, but K barely escapes with just 1 HP from Drastic as well. That was a good effort coming in from A1 Sentinels. So Peachy, I just want to ask, what do you think of like both the teams here in terms of their composition? I think I would really lean towards Team Avon Sentinels. Look at that, the turtle has been taken already. And Nolan, he is trying to try to contest it out for the blue buff as well, since he did win the Battle of Retribution there. Both the junglers don't have a Retribution. Mm-hmm. Oh no, wait a minute. Gushin does have a Retribution, so he does have a chance to get the blue buff, but no, he backs off. He goes back to the base. He just don't want to be there. He does not go back to the base. He went directly to the red buff. Look at that. He does not want to get dying in the hands of Nolan. This is such a big disadvantage coming in for A1 Sentinels. And look at that. As I've said before, Yujin, with her ultimate, she does not use any mana. So that is going to be very, very costly for Team A1 Sentinels as not only their hero is down, but their red buff is down as well. Nolan has taken control of the
jungle area right now. So Ladu Kapi is really holding strong right now. And look at that. As I've said before, I think the K barely escapes that, but also takes that kill as well. That is a 5-1. That is beautiful, beautiful. I do agree with you, Sebastian. You know, Kale's favoring towards Lafu Kabi already since this is the early game. I did not expect it, but Nolan, on the other hand, he did manage to snowball the game. Oh, look at that Gushinka trying to go in with the combination, but no, he will be interrupted there and he won't be completing his combos. It was a little sad sight to see, but on the other hand, Nolan is on his back right now. Looks like he will be safe right now with the very low HP, and that will be the hard cut saving him. This if we are looking at the play here, Nolan is just using his retribution because he does not want their Gishin to farm up, because then again, it is a Gishin. If he is farmed, it's going to be such a problematic hero to go against for Ladu Kapi as well. So that is a wonderful quick thinking coming in from team Ladu Kapi. Okay, I do agree with you. Look at that. Gushin is a little slow when it's come to jungling in terms of Nolan. Nolan, on the other hand, he is very fast in Yes. terms of rotation as well. So that is this skill gap coming in that I'm looking at right now, and that is actually costing A1 Sentinels. Maybe in the mid game or probably in the late game, this could be covered very soon, but I'm not sure. Look at that, Nolan already in the top lane. Looks like carry. The lanes are already freezed. As I think I've mentioned before, the gold lane is going to be the most important here because they're the late game heroes. And Ladu Kabi is really working well because look at that, they are making sure that their Leslie is farmed, even though she's farmed, and look at that, they're also getting the kills as well. Wonderful ultimate coming in from Minstar, but that does nothing to the ganks coming in from Ladu Kapi as well. And look at that, I think Yujin is coming in, but I think she's going to be taken down. No, she uses her ultimate to get away from Nakshell. That is a wonderful timing coming in from Zozo. Oh, that is true. You know, a pretty good skill coming in from Zozo. But on the other hand, look at that Zuxin already going in, and it is with the Crimson Beacon. It's not the Zuxin, sorry, but it would be the Alice going in, and it is just looking little bad for them. Okay, so it was with Alice picking off right here, and it's a mega kill for the Nolan. Team A1 Sentinels, they're trying their best, especially their roamer, but look at that, they are unstoppable. Ladu Kabi are unstoppable. It is already a 9-1 in the scoreboard within 6 minutes. This is going to cost them a lot if they can. Oh no, and the Gishin goes down again, and an unstoppable kill coming in from Nolan once again. He is really quick to follow up on his teammates. That is a good jungler, a very, very good jungler. I do agree with you, but look at that. Oh, wait a minute, Mansukar. What did he just do? You know, he just put his King's Calling in a early position. Looks like the turtles will be taken home by Mina already. Team Lafu Kabi, they are winning the objectives, the neutral objectives coming in, as well as Exactly. team fights as well. Pretty good coming in. And look at that, the flicker already being burned again. What is just happening? A1 Sentinels, they have no choice, but look at that. As I've said before, Yujin is a must ban. Look at that. She just picked off Min Sithar all the way from their tower range as well. So that their roamer is down again, and Angela is going to be a little problematic here because she cannot help in terms of stunning the enemy as well. So look at that. They do not have, they're just recalling in on A1 Sentinels. No, yeah, okay, you know, maybe this will be a game that they would be ending it very early. Look at that. The inhibitor has been already taken from the mid. That is one of the important inhibitor, just without the Lord. And oh,
Okay, the shutdown coming in already. It will be the Alice taking the shutdown for the Edith. Edith is still, Alice is going in with his ultimate, and there we go. The double kill coming in already. Okay, Hardcut will be saving up the Alice this time, but it would be the Gushien going down in the hands of his lover, Leslie, and Leslie also going down in the hands of Gushien. That was a really strong comeback coming in from Alice from Team A1 Sentinels. He played his part, but then again, look at the scoreboard. They are really down almost 10k in on the gold difference as well. So they have to defend with their must. They cannot make any mistakes here because any mistake will cost them the first round. That is true. Since this is a best of three, they might have a chance to battle it out in the second match with a better draft as well. But there we go. The fun fact is here. The Harith, he is actually a time traveler. That is pretty new, guys. Look at that. This will be the Eastern Edge season 2 doing a fun facts. And the first Lord, the early Lord has been already taken by this Nolan and Lafu Kabi. They are just not wasting any time. There we go. It is the Mincet are in trouble. Mincet did pop the King's calling, but it won't be doing it much because no one is there to dash, and a double kill coming in from Leslie. But no, even carried with the spinning light wheel will be taking a kill right there. Even with the King's calling, they cannot have much of a difference here because look at their EXP and their gold difference as well. They are too farmed up to be caught up in a bad situation. But look at that. I think Edith is going in, K is going in to put them in a different kind of situation. But look at that. Jujin, again, as I've said before, she is going in to kill the Angela with a double kill. But she does go down to the Gishin as well. As I've said before, she is just pushing and pulling them out of the group fight. So that is making it a very dangerous issue from there. And I think Nakshal from A1 Sentinels just went in for fun. He does get the kill on Edith, but that is probably a waste because I think their bot lane turret is going down as well. Yo, what did the Gushin just do? That was pretty bad. Dash coming in, even though he did manage to get a skill one onto the Edith, who was very low, but the Earthquake Shatter will be the one doing its job. On the other hand, look at that, the minions are being cleared by Lafu Kabi already. They really want to end this game. On the other hand, the hard card has been popped again onto the Alice. This is pretty good, but I really wanted the Alice to go into the jungle so they could have maybe another tanky hero in front laner. Maybe a Faramis for a mage that could have worked for them, but no, looks like Exactly. the draft gap is already there. Okay, Lantern Flare has been used. She has been. Okay. King's calling into the turret, but it is a killing spree for the carry. Carry trying to go in, trying to end the base. The minions are already in. On the other hand. The Leslie's is such a huge problem because look at that. She's dealing 1,300 damage of true damage. That means that literally no armor can actually defend against that except for Twilight armor because the Twilight armor can reduce a certain amount of damage, even true damage, for a certain while. And look at that. The Leslie does take down with a killing spree. And look at that. As I've said before, her true damage is melting down A1 Sentinels. And look at that. I think carry goes down and the first round goes to Lafu Kabi. That is a wonderful first round coming in from Lafu Kabi. I do agree, since this was just the first match. But ladies and gentlemen, don't go anywhere. We will be right back after a short break.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Eastern Edge Season 2, powered by Indian Gaming Corps. And these are the quarterfinals and the best of three matches. And I am your caster, Asuya, witnessing the great matches between Lafu Kabi and A1 Sentinels. Joining me today is another brilliant voice, Ray. So, Ray, what do you think about the previous match? Thank you for that banger introduction as usual, Asiya. And my opinion on the last match, I was watching it from the backlights, and the absolute domination coming from the side of Lapu Kavi was just way too much for the side of A1 Sentinels, who were not able to stop the snowballing that happened from the side of Lapu Kavi, and they did not even need the Luminous Lord to end this game. And the domination from the side of Lycan was just way too much. And you can see he is the MVP with 0 deaths under his name. And the snowballing coming from his side, the rotation, as well as all the kill securing and the synergy, it was just undeniably really perfect. I mean, what can you expect? They are from the top teams of India. Despite A1 Sentinels being a really good team, they were not able to stop the barrage that Lycan started right from the beginning of the game, and hence he will get the MVP and well deserved in my opinion. And we are seeing the bracket for the quarterfinals, and we see that Celcius Esports have headed on to the semifinals. And right now, we are seeing the second game of the quarterfinals that will decide the fate of both teams and which team will be able to go on to the semifinal between A1 Sentinels and Team Lafokabi. So let's see which team will be able to gain the victory. Will we see a game three, or Lafokabi's domination will continue on and gain them the spot in the semifinals? And that's my analysis for the previous match as well as the bracket. On to you, Asaya. Well, true. A1 Sentinels were utterly crushed by Lafukabi in the previous match. At the same time, Celcius Esports had also been dominating their bracket. I am so excited to watch this match between A1 Sentinels and Lafukabi because they are the top 8 teams, the top of the cream. Will Who will win this match? I I am really excited to see. Yes, indeed. So I think we will be heading on to the draft and ban section soon after the both teams are prepared and ready to go. Well, talking about the previous match, I just saw their draft. Well, they had Zushin open, they had Ling open. Oh my god, those are two meta heroes. Who gives them away? And as we speak, we will be heading on to the ban and the pick section. So, Ray, do you think will there be some standard bans, or will the teams ban according to their homework, which they might have done before? Honestly, giving out that Chushin as well as that Ling, yeah, it was, I think, way too much of an advantage on the side of Lapukavi as well. I mean, they are indeed a good team, but giving them such broken heroes, I think it was knocking on the death's door. And Team A1 Sentinels did pay that huge price and they lost that first game. So I expect the Ling and Jushin will be banned out completely this game to avoid any form of snowballing happening from the first minute of the game. So I expect to see those bans coming in from the side of A1 Sentinels, but it looks like they will be banning out the Hayabusa instead. Well, considering that, Lycan is one of the top assassin users in the tournament right now, so banning out almost all the assassins, it is a good choice, but at the same time, they need to make sure they do not repeat the same mistake they did last game and give out that tuition to the team of Lafo Kabi.
As we proceed with the bans, we see an Argus ban coming from the side of Lafu Kabi, and yes, it does make sense. Although underrated, we all know how OP Argus can be in the late game, especially because he can provide those essential minutes for the entire team. He can hold back some people, some priority targets, and the team can take out the other picks like the mage and the marksman, and especially his late game damage is extremely amazing. And we see a link bang on the side of A1 Sentinels. Well, I think they have learned from the previous game, and I think they'll be banning out literally all the assassins at this point. What do you think, Ray? Yeah, I mean, I am personally acquainted with Lycan, and he is an amazing assassin user. And even if you're not acquainted, you have definitely, watched the games. And Lycan has dominated the tournament with his assassins mainly. So banning out his assassins is the best way to go. And A1 Sentinels do not want to repeat the same mistake, and they will be banning out the Jirushin this time, not giving it to the team of Lafokabi. And for the ban of Argus, I think that is a really nice respect ban coming on from the side of Lafokabi. I mean, despite Argus being an absolute monster in the late game, shredding tanks, mages, marksmen without like any worry, he is a very squishy hero in the early game, and Lafukabi does have the early advantage, the synergy really well. But I think they just wanted to respect the enemy teams, and they banned out from any possible, regrets that might be coming in from keeping him open. And we are heading on to the first pick from the side of A1 Sentinels after the Hylos and Phobius are banned as well. What pick do you think they should prioritize at this point of the game? I feel like it should be a Zask. Do you agree, Asuya? Well, I think it would be a Roger, and yes, it is the Roger. He has been locked on. Meanwhile, I think Lafukabi would be picking maybe an Aurora, maybe a Vexana. Even a lot of heroes are still open, like Terizla, Julian, no, and Tip is open. So Zask is also open, as you said. It can be any one of these picks. We just need to wait and watch, because at this point, so many heroes are still open. But at the same time, as I said, that Terizla will be the priority pick from the side of Lafukabi. At the same time, even Lolita is open, so if they do not wish to waste a ban on an edit, maybe picking up a Lolita could be a good choice over here. What do you think, Ray? Yes, indeed. And I think there is a mismatch of the UI I just noticed, because I see the A1 Sentinels being ahead, above the team Lafu Kabi. And I mean, the names have been switched, but that could be just a simple technical error, which will be solved as we proceed on to the game. But so far from the names, I see that Brendan is the one who picked out that Roger, and he had completely slipped off my mind. And they will be picking that Roger and a son, as well as a you song. And these picks are kind of confusing me. But the Lunox and Terizla are really self-explanatory, as we've seen from the tournaments and from all the games in the meta right now. Their presence is just undeniably strong. What do you think of this sudden sun pick? Well, I think that Roger would be going to the gold lane, because Yuzong has been picked for the EXP, and Sun would most probably be the jungler here. But at the same time, the enemy has Terizla with a. If he picks up a vengeance, it will be pretty hard for Sun to, take out that Terizla. So I'm pretty curious about that Sun pick here, especially because he's so weak early in the game. At the same time, we see a Luo Yi pick instead of that Aurora or that Vexana. Oh my god, she is such a brilliant mage. I think she is a bit underrated, maybe, because she can literally give that chain CC if you do her combos pretty well, and that unlimited, not unlimited, but pretty good teleport ability across the map right behind your enemy. You can ambush the low HP users like the marksman and the mage.
At the same time, we see that Lolita and Nolan has been banned. Well, look at that. So many assassins being banned. Maybe they are just traumatized at this point. But as I said, Lolita has been banned. So maybe an edit ban could be a good thing here. What do you think, Ray? Oh, and just as you were proceeding to say, they actually ban out the Zask because the team A1 Sentinels haven't picked their mage yet, so they do the good decision and just ban out the annoying nightmaric spawn that is this alien Zask. And the edit ban would make sense, but the team A1 Sentinels just know they have done their homework. They know Lycan is an assassin main, and they have banned out total 4 of the assassins in the meta completely, denying him of any form of assassin jungle. So I'm really curious what would Lycan be picking for this game. Will we see Amon pick coming in, or he will just go for the traditional, the fighter hyper like Xborg and Alpha is open, and we see the Carmilla has been picked from the side of Team Lafokabe as we see the last 2 picks coming on from the A1 Sentinels. Which mage do you think A1 Sentinels will be going for? Well, all the pretty good mages like Vexana is open, Aurora is open, so it could be among them, but at the same time, we do not know because we can see they have picked a Sun and they are opting for that Roger for the gold lane, even though a Piper with an Angela could be another pretty good pick here. So I think they're not going for those conventional meta compositions or team synergies. So, well, at the same time, that Yuzong against that Teresla is a pretty good option here because with his passive, he can literally dominate Teresla if played well. And as I said, Vexana has been picked, but they would be picking a Grok? Why is the need of a Grok here, Ray? What do you think? I am really unsure as well because many supports, I mean, Angela and Roger combo is a nightmare to deal with. And so I do not understand what is the need of Grog, especially after the fall of Grace from his position in the meta. So I don't see what Grog could really possibly do at this game, especially considering there is a Lunox who can burst him down in few seconds. Even though the wall rush is a really nice ultimate, I don't see any utilization. So a very odd and weird pick coming from this side of A1 Sentinels. And just like I predicted, Team Lafu Kabi goes for the traditional fighter hyper with the Xbox being open. They just lock him down as the last slot and their jungler. And if you didn't know, Lafokabi has their Lunox this time, which is Brandon's signature gold lane pick. So we will be seeing a few Ruby DD gameplay, the flicker and brilliance ultimate coming on from Brandon. So I'm really, really excited. Even Sentinels does have a decent draft, but their Sun and Grok pick does confuse me a little bit. But anyways, what's your analysis on both teams? Well, I really love the team of Lafukabi because just look at that Carmilla. She is an OP tank because if her ultimate connects to all 5 of those people, along with that Louis using those stuns and the skills, it will be along with that Xbox using his ultimate, it will be a nightmare on the part of the enemy. So as we speak, we move into the land of dawn. We see how the junglers are just farming, and yes, they haven't picked Sun. Sun has gone to the gold lane while Roger is going to be their fighter. Sorry, their jungler. What a change. What do you think, Ray? Who will take the first turtle? I think the very likelihood, like the most chances, is the Xborg with the last ends insanity and the Xborg combo. Sorry, the ultimate combo retribution. He will be able to secure it really well, but it also depends on how Roger can, you know, will be able to do a sneaky steal for him. And we are seeing an odd choice coming in from the side of A1 Sentinels, making Sun go to the gold lane. And so I'm really not. Oh, and Roger has already been taken down just 1 minute 30 seconds onto the game.
and it just went over. I was not able to pay attention because I was just trying to give the analysis for the turtle. But Roger losing his life so early onto the game does not spell well for Team A1 Sentinels. What do you think, Asuya? Well, I mean, Roger was trying to take down that Luoyi, but she got that brilliant support from her team, and as a result, Roger had to give away that first blood. Especially a first blood from the side of the jungler is a pretty, bad thing for Lafu Kabi. For A1 Sentinels. And as we speak, we see that EXP lane engage from the side of Yu Zhong, and Turtle has been taken away by that Xbox, but I think he will be ganked together, but he uses his ult and that armor has been popped off. Will he be taken down? And no, he is able to escape, but no, Grok uses the ultimate and the wall, and they have been taken down, but at the same time, Roger pays while that Luo Yi uses her skills on him. And she's being followed by that eternal guard, but I think she will be able to escape. Although I see that Grok trying to follow that Luoi over there. And he has slain Luoi! Oh my god, what a sneak peek gameplay by that Grok over there, but I think he will be paying for this. But no, he flickers out. What a brilliant gameplay coming from that Rock. What do you think, Ray? I thought that Brock was going to be picked as the rover, but it looks like he is the assassin securing the kill on that Lycan as well as that Louis with that wall. It was just an hilarious scene to see. That is just an absolute alpha move coming in from that Brock, securing 2 kills under his team, and he even escaped at the sliver of his HP. So a very very hilarious gameplay from that Brock, and I hope to see more engages coming in from his side, which would be really nice to see and make the game more exciting and engaging. And I think the second turtle will be coming on soon. And I think both teams are just doing a little bit of rotation on the river, trying to gain resources, trying to gain their minions as Borg rotates to the EXP lane to that crab. Do you think this turtle will be contested this time, as Xborg was able to take it without any issues last time, but he did pay off with his life? Well, as we can see, Xborg and most of the team from the side of Lafu Kabi is in the gold lane, so I don't think there will be any contest for the Lord as soon as it spawns. But we see that beautiful skill by that god over there. But Roger trying to take down Zoro. Will he be able to? Yes, and Louis gets taken down. At the same time, that beautiful stun by that Grok saving that Roger. Oh my god, and I was talking about that Grok is a very weird pick over here. Just look how beautifully he's playing and then teasing them with that recall, because oh my god, what a beautiful gameplay from the side of Sentinels at this point. And Vexana going to gank that Terizla, and she uses her Eternal Guard, but I don't think so. Terizla will be able to escape, and the turtle has spawned, and Xbox again tries to take it down. Will there be a contest for that Lord? Because I don't see their jungler here, and that beautiful flicker ult from Terizla locking the two of them down, and Yuzong trying to escape with his ultimate. Oh my god. That Xbox is pretty good at taking the Lord, because I think that Lafu Kabi is prioritizing their, turrets, their gangs, and the turtles. They are pretty good at it. Ray, what do you think? Yes, and just while you were commenting, I see engages happening on top and bot. Team Lafokabi does lose its gold laner, but Lafokabi retaliates by taking down the Yu Zhong at the top lane and trying to push that top turret to do a fair exchange and a trade of turrets as well as kills. And in my opinion, right now, at least for now, the Xborg is prioritizing taking down the objectives before joining the team fights, because he does need that War X. He does need that immortality for that extra survivability. So I think we'll be seeing a safe gameplay coming on from the side of Lafokabi, who will be playing passive until they have their items, as well as Lunox also needs most of our items to deal a lot of damage. So they are playing it passive, and they are trying to take down one at a time as they head on to the bot lane to take down that Sun. And I think he will be taken down by Carmilla, by K on that Carmilla. Anyways, I think they will be pushing that bot lane, and I think it will again be another uncontested turtle, because
Roger really looks like he's trying to avoid that Xborg and, doing split pushes. You can see he's doing the tower trades. Like, if you want to take our bot lane, I'm going to take your top lane. But Vexana's odd positioning is punished by that Xborg. Xborg does use the last insanity and pops off his ultimate, trying to punish that Roger. And Lunox coming in on the time from the bot lane to take down that Yuzong and punishing him. The turtle has spawned, and I think it will be another uncontested turtle from the side of Team Lafu, and they will be securing it. But Lunox really needs to keep her eyes on the map because Sun is going to be pushing soon. What's your analysis on this so far, Asiya? Well, I see, that Louis is pretty out of position and she's solo, although she should be following that Carmilla, but I don't see her doing that. And as we speak, Lunox has been taken down by that son, but he gets taken down by that tower because he was overextending. And I think Louis needs to, use her skills pretty well because I see her aim has some problem there and she's unable to provide that CC for her team. But at the same time, we see how equal and fair exchange going between both of the teams, and we see some engage coming near the red buff, and Carmilla has taken down that Vexana. Oh my god, both the teams know whom to prioritize. The mages from both the teams are having a pretty hard time because I see both of them getting ganked most of the time here. And the Lord has spawned, and Lafu is trying to take down that Lord because you see they have been prioritizing those objectives from very early into the game, but Roger is in the top lane, so I think so it will be an uncontested Lord for Lafu. But I think it's just the early Lord, and there won't be any problem taking it down, especially when they have that Vexana, and Carmilla has been taken down by that Roger, and from that export, they're trying to take them down, but Sun tries to pop in, and Lunox using that brilliance and taking down that Vexana, but at the same time I think she will pay off, but Roger goes back. Back to you, Ray. I saw quite a lot of engage coming in, and actually see the plan that the Roger has. Roger wants to prioritize his items first. He's not going for any skirmishes, the turtles, the Lord. He even skipped the Lord. He was at the top lane, and I think he's farming sneakily. He's trying to get the items, so because he knows once he has his items, he will be able to take down that Xborg once he uses the last insanity, and he will be at lower health, so he is prioritizing on that. Xbox charges in with the last insanity. Grog does teleport away, but Louis teleportation coming in clutch and takes down that Grog, but I think she will be punished by that Yuzong. Terizla charging in with that penalty zone onto that Yuzong, and Roger does escape, but Yuzong will be punished immediately. And one thing that I will really say is this Sun pick was unexpected, but it has paid off. Sun has taken down Lunox almost 2 times, and he even took down Xbox right at this moment. He is taken down by 3 people, but it was worth it. He took down the jungler of the enemy team, and he is not letting him farm to the level 15. So I think it was a worth it trade, and I feel like the team A1 Sentinels have a clear strategy, a clear plan on their head, and if they're able to execute well, we might be seeing a game number 3 and they might gain this victory. But at the same time, if Lafu carries their discipline and just takes all the objective which Roger is ignoring, their lane would be too overwhelmed by the swarms of minions, and they will be able to take this victory home. What's your thoughts on this, Asiya? Well, as I said before, that Louise being so useful, she just teleported there and didn't allow that Grok to move away and escape. And I think that Grok will be taken down, but he uses his ult to escape. And Lunox dishing out that amazing damage, but I think he will be able to escape. And Vexana using Eternal Guard onto that Louis, but she also escapes in that low HP. I think at this point, Lafu needs to stay back, do not engage, and wait for that Lord. Well, that Sun trying to split push. I think the only reason why that Sun was picked was because they wanted to split push, and they think that a direct confrontation in this game would maybe lead to their downfall, because I see, as you said before, even Roger only taking down the turrets, not the turtle, not engaging much unless there is a determined kill over there, and Lord has been spawned. So what do you think, who will get this Lord, Ray?
I think this might be another uncontested Lord coming in unless Yuzhong and Grog has something to say about it. We do see Yuzhong trying to engage on to the top lane, but he heads back after gaining that Shah essence. Grog trying to provide vision onto the Lord. Roger might be looking for a sneaky steal here, but he might get stunned in. Who will? The Carmilla is the one taking the Lord after both jugglers miss out on their retribution, and Roger will be punished and he will be shut down this time. And this looks like this might be a victory coming in for the side of Team Lafu Kabi, who's charging in onto that base. They have taken down that Grog, they have taken down that Roger, and Yu Hong is trying to come back to the base, trying to take down that Lu Wei, but he might get punished for it, and he is taken down. Sun does try to avenge his teammates by taking down that Xborg, who did not had his Firaga armor, but he is not able to take down anyone else, and I think he will just stay at the base to try and defend. But is it going to be defendable? Because oh my god, with that beautiful penalty zone coming on from that Terisla, and he charges in and takes down that Sun as Vexana uses the Eternal Guard trying to defend it, and they were able to succeeding on defending that Nexus, but they lose the top inhibitor as well as the bot inhibitor turrets. The minions are charging in. Do you think they will be able to defend it, Asuya? I think they will be able to defend it because the Yuzong is back, and at the same time, look at that immense damage from that Lunox, and Terrell trying to take down that Roger, but Roger takes down the kill and the triple kill, and I think it will be a maniac for Lunox. And at the same time, the base has gone down. Lafu Kabi has taken the second game, and they are the kings. They are the victors of that game with their utter domination, with the way they were disciplined roaming around the map, the way they were taking down the objectives. It was such a brilliant. They didn't let even one turtle, not even one lord escape from their clutch. So Ray, what is your analysis of this game? Yeah, and I think we will be seeing the results screen soon and all their stats, their items, and I will be staying tuned for that. And I will give my analysis at that point. But to answer your question, yeah, the other domination from Team Lafu Kabi was just way too much for the A1 Sentinels. Okay. I mean, sorry, malum nahi na, like,
So, here we are, guys, with the results screen, and this is the second match. Utter domination once more on the part of Lafu Kabi. Just look at that match, 20 to 13. Look at that Lunox. Look at that Carmela. What? And look at that Terizla and Export. Mhm. They were utterly dominating the entire game. And I think even Sentinel's picks, like we said from the beginning, that's picking that Sun was a major mistake on their part because the only thing he was ever used for was split pushing. And that Vexana not being able to land up her hits, not being able to connect her chain CC. And even though they had Roger, they still picked something like Grog. Even though Grog performed well in the beginning, but his value went on to decrease as the game progressed because Roger needs something like maybe an Angela with Roger could have been an OP pick, and the way he did not go for any of the objectives, he was literally split pushing. So I think all of these things combined led to the downfall of even Sentinels. What are your analysis of this game, Ray? Absolutely, I agree with you, especially on that Roger part, who just did not come for a single objective, and all of the objectives going on to the side of Team Lafu Kabi gave them the goal advantage, and they were just able to dominate with that golden experience lead onto their side. Not to mention Brandon being the MVP, just like I said, Brandon signature pick for goal lane is that Lunox. And at the end, you did see that Maniac coming in from Brendan, who dived in with that Ruby DD combo, the Brilliance, and the Chaos side ultimate, just taking them, all of them down, and taking down that base, the Nexus, and securing that victory, and securing their position in the semi-finals as they've won the quarterfinal game 2, match 2, both in a row against A1 Sentinels. Congratulations to Lafokabi for making to the semifinals, and I hope to see A1 Sentinels again. And ladies and gentlemen, we are, just like I said, seeing the MVP, Brendan, on that Lunox, his signature pick for that goal lane, especially with that Maniac and that Sky Piercer damage coming in. It was just way too much for Team A1 Sentinels, and it is a well-deserved MVP. Do you think the same, Asaya? Well, of course, she was playing so well. Even though the team had so much CC, she just knew where to position. She knew whom to give the damage to. She had her priority picks. And just look at that. She has that Sky Piercer from early of the game, securing all the kills. Although she was a bit bullied by Sun in the early game, but the late game she had become a total monster. Just look at her gold of 10k. Just look at that KDA of 824. What a brilliant performance by that Lunox, by that Brendan. And it was a mistake on the part of Avon Sentinel not being able to counterpick that Lunox on the goal lane. And so, yeah, what do you think, Ray? Yes, Brandon's signature pick should have been prioritized, but they were not able to. They did counter it early game, but in late game, she was just an absolute monster, and it led to the downfall of A1 Sentinels, and they were able to secure the victory as well as the position in the semifinals, as Lafu Kabe gains the second spot on the semifinals so far, and they will be against Celcius Esports on the next time they will be coming and giving us another amazing performance. And ladies and gentlemen, that would all be for tonight, and we'll be back for the other lower brackets of the quarterfinals, and we'll be seeing which teams will be proceeding on to the semifinals. This is me, Ray, and I'll be signing out with Asiya. Good night, ladies and gentlemen. Asiya, do you want to say anything to our viewers? Well, good night, everyone. And stay tuned for the next matches because we all know we have our favorite teams to support, and it will be a banger game moving on ahead from today. Good night, everyone.